आदि पाश्चात देश तारिणे पाश्चात देश तारिणे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्णा। वैसे तो मेरा मूड हरे कृष्णा सीधे भागवत शुरू करने का था અને सोचा कि सीधे तव कथामृतम हम श्रवण करें, परंतु मोहन प्रभु ने भगवत गीता को इतना अप्रिशिएट किया तो अब मन बदल गया। So after listening to the appreciation by all of you, my heart has changed, transformed. So of the 700 verses from Srimad Bhagavad Gita, if we are to shortlist 7 verses, so far we have discussed out of those 7, the 3 which are major verses in Bhagavad Gita, and it says or reveals that Krishna is urging us to perform devotional service only for him with focused mind on him. तत्पश्चात प्रमुख श्लोकों में से छांटा जाए तो दूसरा 2.47 कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कल ही हमने ये श्लोक कहा और मुझे और कमनीय कृष्ण प्रभु को कल शाम को ही इस श्लोक का अनुभव हुआ। खैर, तीसरा श्लोक 700 में से तीसरा छांटा जाए तो the third one that we shortlist is the sixth chapter, 34th verse, that if we are not focused on the Lord, then we should try to practice. If I have to speak on the 4th verse, then that would be the 26th verse from 9th chapter. So this one we have to take, we cannot leave it behind. Krishna tells Arjuna, यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना अश्नामि प्रयतात्मनः। सो 700 श्लोकों में से 7 श्लोक यदि छांटा जाए तो चौथा श्लोक ये होगा। So the 4th verse out of the 7 would be this one. पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये 4 वस्तु यदि कोई भक्ति से मुझे अर्पण करता है, someone offers the leaf, flower, fruit or water, then I accept it, I consume it, I accept it. So this verse can be beautifully explained in 7 days of Katha. So by just offering a leaf, Krishna can be satisfied or controlled.
and was controlled by Draupadi. So Durvasa Rishi came with 10,000 disciples द्रौपदी को जाकर कहा कि 10,000 के लिए भोजन तैयार करो। तब द्रौपदी कहती to है हमने prepare the food for all the disciples. So Draupadi says that I have washed the Akshay Patra. द्रौपदी परेशान, पांडव परेशान। So महाभारत में तो यहाँ तक Draupadi and वर्णन Pandavas were है distressed, and it is कि mentioned in पांडव Mahabharata आत्महत्या करने के लिए that तैयार हो गए, they were ready to leave their बोले bodies दुर्वासा के or श्राप kill से themselves. मरने से अच्छा They है thought that कि rather हम than स्वयं ही getting युगानुग cursed by जटाजूट मर Durvasa, जाए। it's better to ऐसी die सिचुएशन on आई our और उस own समय द्रौपदी bodily ने fire. कृष्ण को याद किया। And at that time, आप Draupadi सब जानते हैं कृष्ण प्रकट हुए remember, remembered कृष्ण ने Krishna, कहा and द्रौपदी Krishna वो अक्षय appeared पात्र मुझे and he दो। said, "Oh Draupadi, bring that Akshay लेकिन pot भैया वो तो or मैंने patra धोकर to रख me." दिया। तो ऐसा वर्णन है, कुछ जगह पर ऐसा वर्णन है कि उसमें चावल का दाना था, लेकिन कुछ जगह पर वर्णन है कि उसमें That there was का a एक पत्ता लगा हुआ था। rice grain or a लेकिन leaf कई जगह of पर वर्णन है कि उसमें तुलसी पत्र था। spinach, or some तो say कोई that साग there का was a पत्ता tulsi हो या leaf. तुलसी पत्र So हो, no matter whatever was लेकिन there, पत्रम कृष्ण ने वो पत्र ग्रहण but किया Krishna और accepted that दुर्वासा के leaf श्राप से द्रौपदी and और saved पांडव बच गए। Draupadi and Pandava from सो the curse पत्रम of कृष्ण Durvasa कहते Muni. हैं कोई मुझे पत्र दे दो या फिर पुष्प दे दो। So he says that give me or offer me श्रीमद् a भागवत के leaf, 8वें or you स्कंद में offer me a flower. सुखदेव जी In the गजेंद्र की 8th कथा सुनाते canto, हैं। Shukdev जब ji उस ग्राहक tells about the गजेंद्र pastime को of सरोवर Gajendra में बिल्कुल when मृत्युलोक Gajendra स्थिति में was पहुंचा दिया, nearly dead. तब एवं व्यवसिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र ने हरि का स्मरण किया And और at that हरि time के he चरणों में remembered बैठकर जब Hari, आए। and Lord सुखदेव Hari जी when वहां पर वर्णन came, करते हैं कि Shukdev गजेंद्र ji को हरि mentions को देने के लिए that कुछ नहीं था, वो Gajendra had सरोवर nothing में to था offer to और the Lord, सरोवर में एक but he कमल was लगा in हुआ the था। pond गजेंद्र ने वो and there कमल was a उठा के flower भगवान को of अर्पण किया। lotus flower, सो and that पत्रम flower he plucked पुष्पम, and offered it to the तो Lord. गीता ऐसे So समझी जाती Patram है। Pushpam. So कुछ this लोग is how गीता we बोलते should हैं तो माथा घूमता understand हुआ Bhagavad फिरता Gita. है। When some अरे people तो speak ऐसे क्यों Bhagavad नहीं Gita, सुंदर we हम feel समझ सकते हैं भगवत headache. गीता So को, we can understand भागवत Bhagavad से Gita कनेक्ट करें, beautifully, महाभारत how से we can इतिहास connect से to कनेक्ट करें। Mahabharata or गीता के जटिल Bhagavatam सिद्धांत भी and Vedic scriptures. बहुत सरलता The से हम complex इसे समझ philosophy सकते of हैं। Bhagavad Gita can be easily तो सब understood if पत्र we से take द्रौपदी ने the और पुष्प से shelter of the गजेंद्र ने Shastras. फलम, फल के द्वारा रामायण की शबरी। भावना माताजी માટે ગાઉં છું। મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ। एक वार यावी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। आरे आखड़िए मने ओछू देखाय छे, दर्शन विना मारू दिलडू दुभाय छे, नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। सो इस प्रकार So in this manner, को पुकारा, Shabri भगवान की राह देखी। और called जब the राम Lord जी and आए waited for him. तो शबरी ने When क्या Ramji खिलाया? arrived, पत्र what did नहीं, पुष्प
Shabri offered नहीं, patram, फलम। that is the leaf, और flower, फल में no, भी कौन सा but फल जो सबसे सस्ता होता fruit. है? And she offered the cheapest fruit of मैंगो all. खिलाती तो भी समझ में आता। She could have offered a कथा में mango वहाँ or महंगे महंगे फल होते ना, ड्रैगन फ्रूट खिलाते तो भी थोड़ा सा समझ में आता, expensive बहुत fruits भूख like लगी dragon है fruit, तो भी खिला। etc. बेर जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है But गाँव में, she offered the berries which are not that much सो valuable in the शबरी ने फल village. खिलाए। और भागवत में यदि देखें And if we look तो into the गोकुल में रहने Bhagavatam, वाली the उस in भील ने Gokul, कृष्ण the को फल अर्पण किया। Bhilni कृष्ण offered उसे the ग्रहण fruits किया। too to Krishna, and Krishna सो गीता accepted में that कृष्ण कहते हैं, graciously. अर्जुन कोई पत्र So in दे दे, Gita, पुष्प दे Krishna दे, फल says, दे दे और if someone तोय offers me a leaf, flower, तोय or माने fruit, जल। I'll be satisfied. And toyam यदि कोई मुझे means कुछ ना दे, water. केवल So जल भी if दे दे ना, someone doesn't offers तो me मैं anything, प्रसन्न just हो offers जाता me हूँ। water, इतना then सस्ता also भगवान कहाँ I मिलते हैं? will be satisfied and happy. So how इस दुनिया में भगवान को easy or cheap साधारण it आदमी is को to केवल पानी satisfy the देकर Lord? खुश नहीं कर सकते। We cannot satisfy उसे केवल anyone by ड्राई just फ्रूट offering मिल्कशेक या थोड़ा water. बहुत करना So पड़ेगा। we should offer dry fruit लेकिन milkshake, हमारे भगवान etc. तो यह But केवल our जल से भी Lord खुश हो जाते is हैं। so gracious, benevolent, that और he's even तोयम, satisfied with just water. चलो मैं होमवर्क देता हूँ आपको, So now कोई let आप me give कीजिए, you सब कुछ मैं थोड़ी कहूँगा। मुझे पता है, homework. मेरे मेरे जीवा पर आ गया है, So now you have to लेकिन नहीं search बोलूँगा। who offered the water. It's on my tongue, but I will not tell it. सब कुछ You आसानी need से to मिल find it. जाए तो If you खुशी get बहुत everything होती है, easily, then you won't लेकिन आप value it. मुझे बताओ So एक now क्लू you are देना। supposed to tell me जैसे the reference एक for पत्र Toyam. देकर द्रौपदी ने प्रसन्न किया, As पुष्प the leaf देकर was offered गजेंद्र by ने प्रसन्न Draupadi, किया, Gajendra फल offered the देकर flower, शबरी ने, and और Shabri फल की offered वो fruit, भीलनी ने प्रसन्न and the किया। Bhilni ये तो also बोल gave the दिया तो fruit. बहुत इजी लगता है। अब So थोड़ा when I जरा have सा said it, ये it's very सोचो, easy. Now पानी you have, देकर किसने प्रसन्न I किया? keep it or give it चलो एक क्लू दे देता हूँ, a भागवत task में to ही you लिखा that है, you have to find भागवत से where बाहर नहीं है। the Lord was offered water. So I can give you a clue जिसको that याद आ it's जाए in the Bhagavatam. So those who अमितानंद have प्रभु who को can फोन remember कीजिएगा। can let Amit Narayan Prabhu know. लेकिन पत्रम पुष्पम But फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, कृष्ण कहता है कि ये चार प्रकार की he वस्तुएं says ग्रहण that करता हूं, लेकिन I accept भक्तिया, all these four types of भक्ति के things, द्वारा। but यदि कोई only मुझे through the देखे, medium of unalloyed यदि devotional service भक्ति to न हो him. That is तो bhaktya. 56 भोग भी कोई दे देगा। So भक्ति even का if यहां पर अर्थ है भाव। someone offers 56 types of भले मुझे कोई food छोटी वस्तु items, भी दे, then लेकिन also, भाव से but it देना is होगा। devoid of love, सो यहाँ पर then I won't भक्तिया का accept अर्थ है it. भाव। यदि भाव So ना हो bhaktya here तो means मैं 56 emotion, भोग भी ग्रहण love. नहीं करता हूँ। And if it's devoid और of love and फिर emotion, यशोदा then I मैया की don't कथा सुनी accept ना, it. We have यशोदा heard मैया about the सोचती pastime है of Yashoda कि Maiya. मेरे घर पर Yashoda इतनी Maiya thinks गाय, that इतना दूध, I इतना have माखन, so many लेकिन cows कृष्ण and मेरे घर पर नहीं butter खाता and milk, और दूसरों yet he के घर doesn't पर eat at चोरी my करके home खाता है। and he steals from others. कारण क्या था? What was the reason? यशोदा ने सोचा कि मेरे घर Yashoda, पर जो she माखन thought बनता है वो the मेरे butter हाथों that से is नहीं prepared बनता, at my home अरे is वो not prepared माखन तो है by me. लेकिन So the उसमें butter is भाव there, नहीं है। but और it lacks गोपियां love माखन and बनाती हैं emotion. तो उसमें But भाव the है, gopis इसलिए कन्हैया चोरी करके make it खाता है। or prepare it, but हमारे and भजन में, it has the हमारे love and भोगों में emotion. भाव होगा Therefore, Krishna तो steals. So कृष्ण if को we धराने की भी जरूरत नहीं, वो चोरी offer करके आ जाएंगे। the कर्माबाई की food खिचड़ी to the बिना Lord नहाए with धोए love, ब्रश then किए we खिचड़ी don't बनाती even need थी। to offer it. He will जगन्नाथ जी come दौड़ दौड़ कर himself to आकर steal it. खाते थे क्योंकि उसमें भाव था। Kurmabai's khichdi was और eaten दुर्योधन by सैकड़ों Jagannath ji. He हजारों used to लोग come खाए, running, लेकिन कृष्ण ने although she 10 तक didn't नहीं, even bathe क्योंकि with भाव नहीं था। or सो brushed her इस श्लोक में teeth, but 9.26 she में had so कृष्ण much कहते हैं love and emotion. कि मुझे कोई So छोटी से in छोटी वस्तु this दी जाए। verse, Krishna says that देखो even यहाँ if पर और someone भी offers दिखाई है, me कृष्ण ने जितनी anything भी that चीज is मांगी insignificant, वेजिटेरियन मांगी। but इसका अर्थ so तो ये there is नहीं है one कि more पत्रम point पुष्पम that फलम all तोयम these तो things कृष्ण that Krishna has वेजिटेरियन है। asked to offer कुछ are लोग all कहते ना vegetarian. कि So some भगवान ने people कृष्ण say ने दुनिया बनाई तो ये सब
the Lord had made everything and everything exists in this world. So why we cannot eat it? Because we should not eat it because Krishna doesn't eat. He could have otherwise added here अंडा तोयम, fish or पत्रम पुष्पम मांस तोयम, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। meat, etc. लेकिन इससे He didn't have पता any चलता problem, है कि प्रभु but सात्विक है, it वो भी तो implies सात्विक बनाना that the चाहते हैं Lord is और in the सात्विक mode of आहार pure ही goodness, प्रभु and को we देना should चाहिए, also हमें लेना चाहिए। try to eat खैर the बहुत बातें similar हैं, लेकिन food. मैं तो केवल इंडिकेट कर रहा हूँ So I'm कि just, there's so सारे many श्लोक things को to be चाटा नहीं said, but है। I'm just indicating. So this is the fourth और आगे verse. बढ़ें तो So भगवत if we गीता के proceed a little 8वां further, अध्याय का then छठा श्लोक, the sixth verse from the 8th chapter of Bhagavad 8:6, Gita, कृष्ण कहते हैं Krishna says, कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम, यम यम तम तम। अब देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, यम, so yum yum, tam दूसरी tam. लाइन में क्या लिखा है, तम तम। तो यम यम So जैसे yum जैसे yum means स्मरणम भावम, as. आदमी का स्मरण होगा, तम तम वैसे वैसे Smaran उसे means दूसरा जन्म मिलेगा। as he will remember, similar will be his और वो birth. स्मरण Tam tam कौन से टाइम janmam. का होगा, तो कहते हैं And त्यजन what अंते time कलेवरम, it will be इस noted? कलेवर को त्यागने के अंतिम At the समय, time he leaves the शरीर को body, जब हम त्यागते हैं तो at the अंतिम time when मोमेंट we are होता है, to leave that शरीर body, को छोड़ते at समय जो that लास्ट time, मोमेंट होता है, the उस समय last हमारा moment, मन जहां लगा होगा, हमें whatever दूसरा is शरीर in our वैसा ही मिलेगा। mind or heart, we will get the similar तो body. मरते समय हमारा मन कैसा So होगा, at the time जीवन of भर हमारा मन our death जहां or on our जहां death, लगा but है, what will be मरते our समय हमारा focus? मन वहां So लगेगा। our mind will be focused on the things that we भोगों have में done मन in लगा the है तो past. मरते समय If भोगों we में लग have जाएगा, तो फिर enjoyed दूसरा our शरीर प्राप्त senses होगा। or we were भगवान engrossed में in मन sense लगा है enjoyment, तो then we मरते will समय be भगवान में मन लगा in the तो mode of भगवान का sense धाम enjoyment. प्राप्त हो जाएगा। And if we are सो in the मरते service समय of the जैसा Lord, then स्मरण at the होगा time of our वैसा death, शरीर। we will आगे remember बढ़ें, the Lord क्योंकि and will receive the eternal abode of the आजकल Lord. तो मोबाइल ये सब बहुत हो चुका है, पहले के जमाने में So मुझे nowadays the याद है mobiles जब हम छोटे etc. were थे so are तो frequent, ये but फोटो खींचना earlier बहुत दुर्लभ होता था। I remember शादी that it was रसोइयाँ very होती tough थी और to हम get लोग दूल्हे के pictures आगे clicked. पीछे घूमते थे, कम से So कम हमारा फोटो आ जाए। we used to roam around खैर वो near घूमने the में bridegroom so मिले that न मिले, लेकिन ऐसा एक शौक the होता groom था कि नहीं, or bride so that we दूल्हे के could आते get आते ourselves clicked, दो पांच फोटो में हम आ that जाएंगे। at least we will get a लेकिन few दूल्हा भी बड़ा pictures. बुद्धिमान होता है, But the दूल्हा फोटो groom पहले also खींच is ले देता है so कि नकली फोटो intelligent. करना, He और ये लोग used to बोलते थे say that आते ही मेरा just फोटो आना flash चाहिए। and just तो focus एक on me. जमाना था, अपना So those फोटो were the times पासपोर्ट फोटो या कैसे भी फोटो लेने के लिए when स्टूडियो में जाना to पड़ता था। take pictures or get yourself स्टूडियो clicked, में you have to जाने go के to the लिए studio, खास करके माताएं and स्नान करती especially the हैं, mothers फिर will ब्यूटी पार्लर में take the जाती bath. हैं, We go to the फिर अपना parlor, मेकअप करती हैं, put और on फिर the फोटो makeup, स्टूडियो में जाती हैं, then they वहां go to बैठती हैं, studio, वहां पर कुछ पोज देना है, and then they take a और फिर pose. वो फोटो खींचने वाला फोटो खींचता है, क्लिक And करता when है, he clicks the picture, आप 3 घंटे से तैयारी कर रहे हो, you all have been preparing मेकअप since last करना, three तैयार होना, hours कपड़े to पहनना, get है ना, ready आभूषण पहनना, and तीन तीन चार dress. चार घंटे से तैयारी है। You might लेकिन have उस been फोटो में आपकी छवि working for वैसी last आएगी, 4 hours, but वो the क्लिक image करते will समय be अंतिम मोमेंट में the आपने जो image पोज that दिया है what वही फोटो में आएगा। you posed at the और last आपने moment. अच्छा पोज नहीं दिया So if you और have तुम not फोटो given a वाले से good झगड़ा pose, करो कि then तुम्हें if you फोटो fight खींचने नहीं आता, with the तो photographer उसका that बेचारे you का क्या don't know दोष, how to click the picture, वो ही मुंह it's चढ़ा के not his बात करेगा। fault. अब वहां पर हम ये दावा नहीं कर सकते So कि we भाई मैंने cannot तो तीन claim घंटे से मेहनत की थी, that मैं तो we ब्यूटी have worked पार्लर so में गई hard थी, since last मैं 3 तो hours. बहुत सज धज के गई थी, आपने जो कुछ भी किया, You, लेकिन but no फोटो में matter तो वही whatever you आएगा have done, जो आपने the picture अंतिम will मोमेंट get में what क्लिक was at करते the समय last moment, अपना पोज at the दिया। time when the ठीक picture was उसी getting प्रकार clicked. यम यम Similarly, वापि स्मरण भावम yam yam त्यजंतन्ते vapi smaran कलेवरम, bhavam शरीर त्यजन्ते छोड़ते te समय kalevaram. हमारा At the जैसा time we leave स्मरण our और body, भाव
whatever we remember or whatever is our emotion, similarly, we will get the second birth or next birth. So we have covered 5. So if I want to say the 6th one, then in the 18th chapter, 65th verse, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव येष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कृष्ण का सिंपल फंडा है so Krishna has a simple fundamental. He says, O Arjuna, you should focus your mind and heart in me. It is so simple, yet it is so, it doesn't enter our mind. There is only one difference. We don't focus our heart on the Lord, that is manmana, but we do whatever is our whims and fancy. That means we are just following our heart, that is whatever our heart desires. But Krishna tells us to do the reverse, that we should focus on the Lord. We should perform devotional service. We should bow down at his lotus feet. And if we do that, then definitely, sure, you are going to come to me. He says that, oh Arjuna, you take the vow. He doesn't take the vow himself, but he tells Arjuna to do the same. He says that if you focuses your mind, then I will take care of everything. So the last verse, Krishna says that you should leave all kinds of religions and religious principles and just take my shelter. So Mam Eka means all the work that we do in our life should be centered around the Lord. To take the shelter of the Lord, what does it imply? It doesn't mean that physically we have to be at the lotus feet of the Lord. No. Sarvadharman paritajya mam ekam sharanam vraja means you should take my shelter. That implies that every work that you do in your life should be for my pleasure, my satisfaction, and happiness. In Srimad Bhagavad Gita, of the 700 verses, so we have shortlisted these 7. So there are so many other. If someone asks me next time, then there will be some different verses. So in this consciousness, the 7 that I could find, I should. And future, you ask again, then there will be some other different verses. But these are the ones that I thought and I presented in front of you. So now let's proceed towards the discussion of Gopi Geet, the 346th Katha. The last time we will be singing this Gopi Geet together, and then we will proceed to the Tav Kathamritam verse and we will listen regarding the same. So now let's sing with love and emotion the Gopi Geetam. जात चरणा किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna. I welcome you all, the loving devotees of Srimad Bhagavatam. मुझे बदलना पड़ेगा। गोपी गीत अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, The loving devotees of Srimad Bhagavatam and Gopi Geet, I also extend my warm welcome to the senior devotees of International Society of Krishna Consciousness ISKCON. I also welcome you all who have gathered through all the parts of the world through the medium of Facebook, YouTube, etc. All the listeners of this Katha, and with their loving heart filled with emotion, the organizers of this beautiful Katha, the Patel family, और भावना माता जी, इनके सुपुत्र केतन and प्रिया, their son Ketan, Priya, their daughter Dr. Gopi, Mukesh, and all the kids of the family, and the great deity who I got an opportunity to name, their presiding deity, Sri Radha Madhur Gopal. मधुर मधुर वंशी बाजे सहित वृंदावन। सो परम मधुर श्री लड्डू गोपाल जी, The very sweet Laddu आप Gopal सभी ji, भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में पुनः एक बार last हार्दिक स्वागत। and concluding day of this आप Bhagavatam सबके Katha, चरणों में and भक्ति का प्रणाम। please accept our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. वैसे आप सभी भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। Usually I feel very लेकिन कुछ दिन happy से when I see you and I get motivated, inspired as well. एस मलिश, जरा स्पॉटलाइट कीजिए, ये So बच्चे can you जो कथा please सुन रहे हैं, spotlight on S. Malesh, those kids who listen to मलिश the क्या है? Bhagavatam Katha regularly? ये 2 5 6 बच्चे रोज So कथा these सुनते small हैं। kids listen to the स्कूल में क्यों Katha on a daily basis. बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में रात को 12 12:30 बजे Late तक at night, मैं रोज देख रहा हूँ yet I see them कि on a daily भागवत कथा basis सुन रहे हैं। that they are listening to Srimad चलो बड़ों Bhagavatam. को तो बुद्धि भी होती है, So the और अब adults are संसार की still विपत्ति भी हो intelligent जाती है, and are somehow detached as और well. कुछ करने लायक भी नहीं रहते हैं। कथा सुनने के अलावा करेंगे भी तो क्या And they करेंगे बताइए। have no लेकिन ये nothing बच्चों की much to खेलने do. की उम्र But है। these kids इन who छोटी छोटी बच्चियों are के in the लिए age to बहुत सारे play ऐसे कार्य and they have हैं so much जो वे कर other सकते हैं, work that they can do, लेकिन फिर भी but yet अपने सारे खेल कूद को, they अपने कार्यों have को kept छोड़कर all their work इस and प्रकार activities and भगवत play कथा का श्रवण aside करना to listen to the बहुत Srimad बड़ी बात है। Bhagavatam pastimes is a कभी कभी great बच्चे feat to सुनना चाहते हैं perform लेकिन or उनके achieve. पेरेंट्स सुला देते हैं, कल सुबह स्कूल में जाना है, सो जाओ।
लेकिन इनके माता पिता को भी हम धन्यवाद देंगे। We should thank their parents बहुत सुंदर also. संस्कार है। They have given such a great आप सभी भक्तों को इतना सेक्रीफाइस teaching and करके education. और You मुझे all have सहते हुए, sacrificed so मुझे much सहन to करते tolerate हुए आप me, लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। and you all are इसका listening धन्यवाद। to the pastime. So I'm really thankful to all of you. ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज Although के बाद, इस I कथा के don't बाद, like इस post this व्यासपीठ से katha from this हम 2 महीने Vyaspeeth. के बाद मिलेंगे। We will जैसे meet हम लोग after 2 मिलेंगे, months. Although we will जैसे अमित meet, नारायण प्रभु ने कहा ना, as Amindan वंडरफुल Prabhu told, आयोजन जूम के द्वारा a wonderful सबको दिखाया जाएगा। program will be there through the medium of Zoom. So we will लेकिन meet. यहाँ से अमेरिका की इस व्यासपीठ से 2 महीने के बाद मिलेंगे। अहमदाबाद में कथा है। अहमदाबाद के बाद हरिद्वार में 7 दिन कथा है। Ahmedabad, and after that हरिद्वार in के बाद Haridwar, दिल्ली, and after that दिल्ली it's in दिलवाड़ा Delhi. जी, दिल्ली में कथा का आयोजन है। So there is a फिर मुंबई में भागवत katha कथा का in आयोजन है। Delhi and 5 then दिन in सूरत Mumbai, में and आयोजन 5 है। days in Surat as well. फिर पुनः मुंबई में भागवत And कथा, then और again there फिर will be a दुबई में, katha in Mumbai और and then फिर in क्रूज में। Dubai, इस प्रकार then से in a 2 महीने का cruise. प्रोग्राम So है। it's 2 months लेकिन मैं schedule. आप सबको स्पेशल निवेदन But करता हूँ let me कि request हमारे personally बीच to all में, of you हमारे अमृत चर्चा that के इस परिवार के the family of our Amrit सदस्य Charsha, श्री बलभद्र प्रभु, बलदेव भाई भगीरथ आयोजन करने जा रहे हैं। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, ऐसे आप में picked up the Govardhan. सबके बीच में, हमारे Similarly, ही श्रोताओं के बीच में one of हमारे the listeners बलभद्र from प्रभु all of बलदेव भाई you, पटेल our Balbhadra अहमदाबाद Prabhu or में Baldev Bhai Prabhu, भव्य भागवत has कथा का organized a आयोजन कर रहे हैं। great Bhagavatam Katha in और Ahmedabad. वैसे भारत में हम तो कथा बहुत And जगह पर किए हैं, although लेकिन I have done अहमदाबाद so में many प्रथम Katha बार in so many भागवत कथा places in होने जा Bharat, रही but this है। is the first time we will be और speaking in हजारों लोग इसमें Ahmedabad, भाग लेंगे, and thousands और of अनेकों people प्रकार will का be participating, आयोजन, प्रसाद, कीर्तन, and there will be गीत, so much बहुत कुछ है। arrangement, prasadam, etc. और बलदेव भाई अभी रात की नींद And उड़ गई है। Baldev Bhai कथा में भी is उस not दिन able से to मैं sleep. समझ रहा हूँ कि नहीं आ पा रहे हैं, I could see he क्योंकि is बहुत not बड़ी attending the जिम्मेवारी होती Bhagavatam है। Katha. हजारों लोगों को संभालना, उनको खिलाना Yes, पिलाना, उनकी व्यवस्था, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम सब such hard work to organize a Bhagavatam Katha. बलभद्र प्रभु के लिए, बलदेव भाई के So लिए प्रार्थना करेंगे we all कि should भगवान pray for उनको शक्ति Balbhadra दे, Prabhu that the और Lord उनका gives जो him मनोरथ है strength and his अहमदाबाद की desire जनता को भागवत कथा to, का श्रवण कराना, so that ये the मनोरथ people of Ahmedabad could निर्विघ्न listen संपन्न to हो। Bhagavatam Katha. It should be और न performed केवल without any अहमदाबाद, फिजिकली obstacle. तो हम वहाँ रहेंगे, And so लेकिन physically साथ ही we will be साथ there, जूम अमृत but चर्चा along के with that, माध्यम से Zoom हम Amrit सब साथ Charcha में रहेंगे। will be present, so we all will be together लेकिन अब as फिजिकल well. कथा का सिलसिला 2 So, महीने तक but now चलेगा। for 2 months the kathas आप will लोग be more पूरे physical. मन से हमारे साथ चलिएगा। So please, you also travel with your पता heart नहीं with अमित us. नारायण प्रभु आज इतने सज कर क्यों बैठे हैं। कुछ नए लोग तो चकमा खा गए कि वक्ता लाल गोविंद दास हैं कि अमित नारायण हैं। Some people are shocked आज कथा में whether आज the वो लग रहे speaker हैं, is हम me or अनाउंसमेंट Amindana करने वाले Prabhu. आज लग रहे हैं। I'm looking as if I'm the announcer. मुझे पूछना, मैं भूल गया कि उनकी कोई I जन्मदिन या forgot to ask मैरिज whether एनिवर्सरी तो it's नहीं, his birthday or अभिनंदन marriage कैसे anniversary, भूलेगा। etc. A person खैर, सो dresses धन्य well हो on बलदेव special भाई, occasions. So बहुत great सुंदर is Baldev Bhai, आयोजन who is organizing this संकल्प है beautiful उनका। katha. गोपियां So the गोपी gopis, गीत गाते हुए while इस reciting the कथा की Gopi ही महिमा Geetam, प्रस्तुत कर रही हैं। इस संसार में कथा समानम भुवि नास्ति किंचित,
कथा के समान So they're और कोई saying that कार्य नहीं है। there is nothing कथा far के greater समान और than कोई उपकार the नहीं है। pastimes of the Lord. There is कथा के nothing more समान charitable इससे बड़ा than और कोई दान giving नहीं है। pastimes of the Lord. That is the most greatest कल हमने सुना, हम लोग charity to be done. So हमारी yesterday कथा आज की है we heard, so we were stuck on this Kalmasha Apaham. तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण, So the gopis say, आपके विरह में हम "O लोग तो Krishna, मर गई होती, लेकिन आपकी कथा सुन सुन के हम लोग जी रही हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण saying that we all have been अमृतम listening to your pastimes and महामृत इति अमृतम, हमको survived. मरने से Why? बचा रही हैं। It is saving us from dying. It is like a lifeline which is तप्त keeping जीवनम, us आपकी alive. कथा तपे Your हुए pastime, दग्ध जीवों Tapta को Jivanam, जीवन that प्रदान means all करती the है। living entities who are तप्त माने burning दुखी in this करती हुई material हमको world रखती है। are हमारे provided with जन्म bliss मृत्यु and के चक्र में ecstasy. फंसे हुए को It मुक्त breaks करती the है। cycle तप्त of माने repeated birth and विताप death. आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक के It जीवों को सुख प्रदान also करती है। is तप्त providing माने bliss from आपके all विरह the में जो three तप्त types है of miseries of the उसे आपकी world. कथा जिला So देती है। those who are suffering और from अंत में this तप्त माने material fire मृत्यु will be से भी are आपकी saved कथा by उगार your देती है। pastimes or सो proclivities. तप्त जीवनम कवि भीरीडितम, बड़े बड़े कवियों के द्वारा So they say that the वेद great व्यास, poets वाल्मीकि, or वशिष्ठ, great personalities like नारद Vedvyas, जैसे Vashisht, बड़े बड़े Narad, ऋषि मुनियों के etc., द्वारा all these कृष्ण great आपकी sages कथा गाई गई है। have sung your बड़े glories or बड़े your महान pastimes. महापुरुष All महानुभाव the आपकी कथा great गाते हैं, humans रिकमेंड or करते हैं। personalities sing and ये सब recommend हमने सुना। your अब हम आए हैं pastimes and proclivity. तब कथा So we have heard कल्मषापहम, till that point. आपकी So कथा now we will be कल्मष discussing अपहम। Kalmasha कल्मष Apaham. को अपहम माने नष्ट कर देती हैं, मिटा So it देती हैं। destroys. Apaham means to destroy. कल्मष का एक अर्थ कल हमने सुना, केवल याद करा रहा हूं, हमें आगे बढ़ना है। श्रीधर स्वामी ने कहा कल्मष माने काम कर्म, कल्मष माने कामना और Kalmash कल्मष means माने the बुरे desire कर्म, and हमारे our पूर्व bad जन्म के deeds बुरे कर्म that जो we have आज performed कर्म in our बंधन के रूप past में lives, प्राप्त हुए हैं। which are और उस कर्म forming बंधन a के bondage कारण for us. उस कर्म And due to भोगी this पुरुष को bondage मिलता है। of परंतु our कृष्ण यदि कोई past आपकी karma कथा or सुन deeds, लेता है we have to तो वह कर्म tolerate बंधन them. से मुक्त But हो someone जाता who है। listens to your उनके सारे proclivity कर्म, gets जैसे कल relieved गीता में from कृष्ण ने कहा था these कि sins of the ज्ञानाग्नि past. सर्व As कर्माणि भस्मसात Krishna कुरुते, said yesterday in Bhagavad Gita, जैसे अग्नि में डाला हुआ as the ईंधन fire अग्नि भस्म destroys कर देती है, all the combustible उसी material ज्ञान in रूपी अग्नि present में in that हमारे fire, सारे बुरे कर्म similarly भस्मसात कुरिया, all your भस्म all हो your जाएंगे। sins will be burned आपकी in the कथा fire बुरे कर्मों of को मिटा transcendental देती है। knowledge. अब कल्मश का एक नया अर्थ सुनिए, गुरुदेव के मुख से The सुना meaning है। of kalmasha, कल्मश kalmash, which I have heard कल्मश from the गुरुदेव कहते हैं from our Guru Maharaj. कि So he कृष्ण को says छोड़कर that अन्य to जो leave भी Krishna, कामना है, इच्छा है, whatever सब other कल्मश है। desires we have are ये गुरुदेव के kalmash. अंतःकरण से निकला, इसे So किसी this is खोपड़ी में from मत the heart रखिएगा। of our Guru Maharaj. ये
It won't be written in any scripture. It has come from his pure consciousness. So he says that everything, every desire except the desire for Krishna is kalmash. और कृष्ण को छोड़कर अन्य सारी इच्छा कामना वासना कलमश है। वो कलमश कैसे दूर होगा? एक्चुअली वो कलमश ही दुख का Get कारण है। relieved of these kalmash, कृष्ण को छोड़कर अन्य and कामना ही प्रॉब्लम that का is कारण है। the reason of our problem and distress, because we desire everything else except Krishna. And it has been presented very beautifully by Kunti Devi. If you want, we can share it with you. Do you want to listen? You want to see that? भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति निकेचन। देवी कुंती कहती है, So the Mother Kunti says, कलमश शब्द है ना, देखो नीचे कलमश गोपियां कहती हैं और कुंती भी कहती हैं क्लिश। ये so you can कलमश see this kalmash used by the gopis and klish used by Kunti is similar or same. What does Kunti Maharani say? She says, Bhave Asmin, that means in this material universe, Klish, yeah, Klish Maranam, that means everybody is suffering. So, Klish can be referred to as distress or sorrow. And what is the reason? Kunti Devi says the reason behind that is avidya. That is the fundamental cause of our misery. जब किसी आदमी में अविद्या उत्पन्न होती है तो अविद्या अज्ञान के कारण कामना उत्पन्न होती है। Because of our ignorance, we desire. What does Kunti says? She says through ignorance we get desire, and through that, to fulfill that desire, we work. So that ignorance leads to desire, and desire leads to the deed or work. And it is referred to as sin or evil deed, and that comes as distress in our life. So, in essence, we all have kalmash, that is sorrow, avidya, that is ignorance, काम, that is desire, and karm, that is the evil deed. But Kunti Devi says, वो क्लेश कैसे खत्म होगा? श्रवण स्मरण अर्हाणि। distresses can be removed. How? By just listening to your pastimes, all these can be destroyed. So, in this manner, Devi Kunti's divine words are here. And then she starts singing. She says, Oh Krishna, the people who listen to your pastimes, they see you. So to listen to your pastime implies वो सुन नहीं रहा, वो आपको देख रहा है। ये कथा सुनना माने भगवान को देखने के बराबर है। listening to the pastimes of the Lord is similar to seeing Him. That is why the scriptures are referred to as Darshan Shastra. So we can't see the Lord by eyes but through our ears. And people who listen to you see you, and
gets rid of this material existence and attains your lotus feet. And what is the process? Shrunvanti, to listen to your proclivities. So in this manner, Kalmash Apaham, Devi Kunti also has referred to this, that by Krishna's pastimes, we can get relieved of our material desires and sorrows. ओके, यहां पर एक प्रश्न है कि A कृष्ण question कथा सुनकर that after हमारे listening हृदय के to सारे the कलेश pastimes of दूर the हो Lord, जाते हैं, राइट? all ये our तो हम लोग सुन रहे हैं, misery लेकिन is हाउ, destroyed. That कैसे? we are हम listening, but कृष्ण how? कथा सुनेंगे तो So when कल्मश we listen दूर to the कैसे pastimes of the होंगे? Lord, वो कल्मश how दूर our कौन करेगा? sorrows will be removed? Who will remove them? वो कल्मश स्वयं भगवान ही दूर करेंगे। So those distresses will be removed जब हम by the कृष्ण Lord कथा Himself. सुनते हैं ना, When we listen तो to ये the जीव, pastimes ये of the पावन Lord, जीव then अपने this कल्मशों को, अपने embodied दोषों को soul अपने अपने बल से, अपनी बुद्धि से कितना दूर कर सकता है? मणिभूषण कुमार, आप ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो। ऐसे ऐसे करते तो मुझे लगता है आप ना ना कर रहे हो। खैर, तो सो so कल्मश अपहम, ये जो यहाँ पर kalmash apaham, which कि तव is कथा, आपकी sung कथा by सुनने से the gopis, कल्मश दूर होते हैं, कैसे? that all the distresses तो are आपकी removed. कथा जो सुनता How? है उसके The कल्मश one who कृष्ण listens आप to ही the दूर करते हैं। proclivities, because their distresses सुनने or में sorrows कथा are और destroyed कल्मश by दूर कौन you. करता है? स्वयं भगवान। So we listen to कैसे? the pastime of the तो Lord, and श्रीमद् the Lord भागवत जी Himself 1, 2, removes 17, our श्रीमद् distresses. भागवत में सूत जी So in कहते Srimad हैं, Bhagavatam, first श्रृणुमताम canto, second chapter, कृष्ण कथा, यदि हम सुनेंगे क्या? कृष्ण कथा। यदि हम कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण if कथा we कैसी listen है? to दूसरी लाइन the में पुण्य pastimes of the श्रवण Lord, कीर्तन है। how is कृष्ण it? कथा पवित्र It है। is Punya कृष्ण Shravan कथा के Kirtan. श्रवण That और means कीर्तन it पुण्य is देने वाले, pious, पवित्र करने it वाले। purifies us, और it जब हम gives कृष्ण us कथा सुनते piety. तो प्रोसेस क्या And है? when we दूसरी listen, लाइन what is में, the process? It is दूसरी mentioned लाइन से in the. स्व शब्द निकाल लीजिए। So let's स्व take the कृष्ण Swa माने word कृष्ण from the स्वयं। first line, जब हम that कृष्ण कथा Lord सुनते हैं Himself, तो when we हृदय listen to His अंतस्थो pastimes, कृष्ण हमारे हृदय Hridi में आ जाते हैं। Antastho, He enters our heart. जब हम श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा When सुनते we हैं, तो listen to कृष्ण the pastimes of हमारे the Lord, हृदय में स्थित then होते हैं। और He जब हमारे हृदय में आते हैं तो देखते हैं, अरे बाप रे, situates यहाँ तो सब Himself in our अच्छा है, heart, and अच्छा then तो He सुन see रहा है, लेकिन अनेकों दोषों को लेकर बैठा है, अनेकों गंदगी भर कर बैठा है। और अब ये कृष्ण कथा सुनने बंद करने वाला है, contamination in His heart. तो क्या करे? कृष्ण सोचते हैं कि अब So इसके दिल में Krishna जगह नहीं cannot है, live there. So what तो एक can He काम do? करो, जहाँ रहना है So उस He जगह को thinks that साफ कर I देते have हैं। to stay here, तो so दूसरी I लाइन need में to कहते हैं, clean this हृदय place. अंतस्थो ही भद्राणी। Hriday स्वयं भगवान antastho श्री hai कृष्ण badrani, हमारे that हृदय को, Lord हृदय Himself को विधुनोति, purifies our heart. धो डालते हैं। He cleans all हम our लोग केवल impurities. धोते हैं, कृष्ण विधुनोति, विशेष रूप से So धुनोति, we just धुलते हैं। clean, He cleans हमारे it धोने में, भगवान in के a धोने में great अंतर है। manner. Vishesh. हम We here, विधिवत wo here ढंग से stands चित्त for को साफ करते तो फिर Vignoti, से भर means जाते हैं। हमारा He संकल्प कैसा है? cleans कुछ लोग सिगरेट with पीते हैं, great संकल्प effort. लेते हैं कि आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगे, वो डिब्बा भी फेंक देते हैं, सिगरेट फेंक देते हैं। कितने दिन के लिए? 2-5 दिन के बाद वही शुरू हो जाते हैं, हैं? Oh, not to smoke, but क्या after a होता few days we है? start लेकिन smoking. हाँ, So जब हम how much we कृष्ण can कथा clean सुनते ourselves? हैं But when we listen to तो the pastimes कथा of the और Lord, कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कर्ण के then माध्यम से the हृदय में आते हैं कृष्ण, Lord and His और वो pastimes are not कृष्ण different, and He विधु नोति, enters through the हमारे medium of चित्त, हमारे ears हृदय को धो to देते the हैं, heart, साफ कर and then देते He हैं। cleans our heart, क्यों? He वाई? purifies our heart. Why? तो अंतिम शब्द में लिखा है The last word स्व you can see, सताम,
Suhat Satam, because he is the well-wisher of the people in the mode of goodness, or those who listen to the pastimes of the Lord. He becomes their well-wisher. Therefore, he cleans the heart of such people. कल्मशाप हम, हे कृष्ण आपकी कथा कल्मशों से The मुक्त gopis say that your pastimes relieve us of all the kalmash or mystery, and it purifies the heart of the law of the devotee of the Lord or listener of the pastime of the Lord. So Brahmaji says that whoever listens to your pastime and you enter their heart, and no matter what, you cannot get out of their hearts. He says, "Oh my Lord, na upeti, even if you desire, you cannot go far away from the heart of a devotee." Why? बांध लेता है, आप इच्छा भी करो तो नहीं जा सकते। बताइए, कथा सुनते हैं भगवान हमारे हृदय में आते हैं। Even if you desire, you cannot leave them. Then Krishna thinks that, okay, now I will get out of their heart, and the next day they again start listening to the Katha. So when we listen to the pastimes and we think about the Lord, and the Lord stays there in our heart, and before he could leave, then we start listening to the Katha next day. So, oh Krishna, you never leave the heart of the listener of the pastimes. And these are the words of Lord Brahma himself. कल्मशाप हम, सो इस प्रकार गोपियां कहती हैं कृष्ण The आपकी कथा gopis say, सारे कल्मशों से मुक्त कर देती हैं। all distresses can be destroyed by just listening to your pastimes. Shripad Sanatan Goswami has given a beautiful interpretation of this word, Kalmasha Apaham. He says, we're talking about this Kalmash Apaham. He says, a devotee or the listeners of the pastimes of the Lord, what is their sorrow? For ordinary people, there can be so many other miseries and distresses. But for listeners of the pastimes of the Lord are not that much distressed. But they have two problems in their life. So all of you who are sitting in front of me, सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी में ये लिखते हैं। Brahad Toshni says वो कहते हैं that कि जो व्यक्ति भगवान की a person सुनने की who listens or desires to listen to the pastimes of the Lord, आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं, and I'm indicating all of you here, कथा का रसिक हो चुका है, those who enjoy the pastimes of the Lord, ये दो प्रॉब्लम है। so they face two distresses. So for us, there are two problems. What are those? कथा मृत पान करने में जो रत है, So those who are engaged in listening to the pastimes of the Lord, they face two distresses. First is the disturbance from the material world. अब हम तो चाहते हैं कथा सुने, आप लोग चाहते हैं कथा सुने, लेकिन संसार की कोई व्यक्ति, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई To the pastimes of the Lord, but because of the material work or obligation, we get obstructed by the same. And the second is शुभ और अशुभ कर्म हमको कथा सुनने में बाधा देते हैं। our good and bad deeds obstruct us from listening to the pastimes of the Lord. So
For example, when we have done some good deeds, so we get quite facilities, and because of that we are unable to listen to the Bhagavatam Katha. Some people are so rich and from affluent family, they can't sit on the ground and listen to the pastimes of the Lord. क्योंकि उनके शुभ कर्म पूर्व जन्म के इतने अच्छे माने क्या कहेंगे वो पुण्य कर्म है. They have done so much good work, but sometimes they obstruct us, and sometimes even our past evil deeds obstruct us. So here, so many people want to listen to the pastimes of the Lord, but they fell asleep. They know that it is the best thing to do, and this is the goal, and from this we will get love towards the Lord, but they fell asleep. The reason is, in their past life they might have done something bad, and it comes as the mode of ignorance, and it disturbs us there. Imagine we people who are unable to sleep in the but when we to listen to the pastime or chant, we fell asleep. Why? Because these bad deeds obstruct us. Sometimes in the physical kathas also I observe a person doesn't comes to the katha, or even if he comes, he cannot sit more than 5-10 minutes because their sins don't allow them to sit there. Even if they want, they can't. Therefore, Sanatan Goswami has written Kalmash. We are discussing this Kalmash here, that those who want to listen to the pastimes of the Lord, दो विघ्न है, दो कलमश है. एक two distresses. First, all the disturbances from the material people or material things, and the second is our evil or good deeds. So how these can be removed? By hook or crook, we should continue listening to the pastimes of the Lord, and we should try to engross ourselves more into the proclivities of the Lord, and then whatever disturbances we are feeling, that also will be removed. Kalmasha apaham. So it destroys the misery of the world, and it also destroys the evil and good deeds that obstruct us. Otherwise, initially, we fell asleep. So after getting birth from the womb of the mother, did we started listening to the katha? Sometimes previously we didn't enjoy that much, but gradually we developed the taste. So this interest has risen gradually. Why? It is the reason is the proclivity of the law. The more we listen, the more we get interested in the same. It is called in Sanskrit, इसको जितना सुनते जाएंगे बाधा मिटती जाएगी, संसार की बाधा more मिटेगी we get और शुभ अशुभ कर्मों की बाधा मिटेगी interest, and और all our उस कथा के distresses मानसिक and भक्तों के लिए obstructions will be removed. हाईवे फ्रीवे बन जाएगा. And then we will have इसका a उपाय भी यही है freeway कि कथा highway. सुनते रहो. So the solution is to कथा listen सुनने to की the नींद pastimes आती of the है, Lord. बाधा So होती है, some कोई people बात नहीं, say that सुनते रहो. sometimes we fell asleep, सुनते सुनते सब we कुछ get हो जाएगा. obstructed. So you should continue listening. That is the solution. तो इस Gradually, प्रकार it से will become better and मैं better. देख रहा हूँ हमारी So in रेवती this manner, माता और भी I बहुत see सारी माता जी our हैं. other Revati Mata and कथा सुनते other समय Matajis, देखिए वो while जॉब में भी है और listening to कथा the में भी katha, they are उनका मन working, उससे भी but ज्यादा yet लगा हुआ है. their heart is लेकिन उनके मन में in the होता तो pastimes of the Lord. हम भी कभी बैठ So कर they सुने, might be ये संसार have a ये desire सब that we will बाधा है, also कोई बात नहीं. sit and जिस listen to the अवस्था में katha. है So no जिस matter परिस्थिति में whatever है stage or हम शुरू situation we से कथा are, सुनते रहे. we should just सुनते continue सुनते listening सुनते राधा to the रानी pastimes of the सारी Lord. बाधाओं को मिटा देगी. कृष्ण सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कथा के दौर में Our ज्ञान के distresses दौर and में obstruction. कुछ हमारे जीवन में भी विघ्न आते हैं So when we और हम preach, गुरुदेव we के also पास get जाते हैं some तो यही कहते हैं कुछ नहीं करना है,
obstacles. So when we go to our Guru Maharaj, he tells that we should not focus on the obstacles, we should focus on the pastimes of the Lord, and gradually, by the mercy of Srimati Radharani, everything will become proper and perfect. So Sripad Sanatan Goswami says, for the people who listen to the pastimes of the Lord, that if you get obstruction in listening to the pastimes, your pastime only can remove them as well. So by listening to the pastime first, the obstacles of material world are destroyed. All the obstruction of our evil deeds or good deeds is destroyed. We get or acquire knowledge, we get detached, and we get the love towards the Lord. So, what was the last question yesterday? Where did we stop yesterday? That the pastime is one, that is to listen to the pastime of the Lord. But how could we can get so many fruits out of one work? So one work usually give one result of fruit. How can we get so many results of fruits by doing one work? So it is explained by Nav Yogeshwar Muni beautifully in 3 verses. Then only you can find the answer for the same. So the pastime is such that Lord Nimi Maharaj asked the questions to the sons of Rishi. He says, what does the Sanatan Dharma means and what is their religiosity or dharma? What should they do? Then Nav Yogeshwar Muni tells beautifully in this verse. निरथांग पाणे जन्मानि कर्मा निचयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलजो विचरेद संग। सनातन धर्म किसे कहते हैं? So श्रुणु। they say, what does Sanatan Dharma implies? सनातन धर्म में सबसे पहली बात यह है कि सुनो। अच्छा क्या सुनो? सुभद्र। Eternal Dharma is to listen. What should we listen? Subhadra, that is auspicious. So the one who purifies what? Rathang Panir. Pani means hand, who has the wheel or the part of the chariot in his hand, that is the wheel. So the one who has the wheel of the chariot, who is he? Lord Shri Krishna. So we should listen to the pure, pious Lord who holds the chariot wheel in his hand. So what are we supposed to listen? We should listen to his pastimes of his birth and his work, whatever he has done. कृष्ण की लीला को गाना चाहिए, कृष्ण के उन नाम को लेना चाहिए और स्पेशली तद अर्थ कानी, chant those names, and we should try to understand the meaning of these pastimes word by word. That is what we are trying to do here. And how?
Gayan Vilajjo Vichred Sangha. So all these pastimes of the Lord should be sung without any shame. Vichret asang means by getting detached or by leaving attachment. We should listen to the pastimes of the Lord. That is the eternal or Sanatan Dharma. घुमा दिया, हो गई सनातन धर्म, हिंदू धर्म। वहीं पर हमारा सुबह 3 मिनट में हिंदू धर्म पूरा हो जाता है। फिर दूसरे For दिन us, ordinarily, we just offer incense and lamb, and in 3 minutes we just finish our eternal dharma. But in actuality, we should listen to the pastimes of the Lord. And how we should listen? Evam Vrat. We should take a vow. Whether it is day or night, if we should take a vow that we will log in Amrit Charcha. I want you all to take whole Ganga Jal in your hand, and you should take a vow that we will leave everything but not Amrit Charcha, whether it is day or night, because it is written here, Evam Vratam. एवं व्रत, व्रत के साथ। ऐसा नहीं मूड हुआ तो सुना, नहीं मूड हुआ तो नहीं सुना। हमारे बीच में कुछ लोग वैसे भी हैं, मैं तो सबको देखता हूं, Some मुझे सब दिखाई देता है। listen whenever it is सब दिखाई देता है, for मुझे नाम भी। अभी देखो it, फिजिकल कथा में नाम whether भी it is लिखा है, convenient for them or नाम not. के साथ सब। So I see all of you here तो कुछ and with मूड वाले names. हैं So there are और कुछ some लोग who कमिटेड हैं। come on their whims and कुछ भी fancies, हो but जाए, चाहे others रात हो are जाए, दिन हो जाए, committed no मैं matter उसका it is वहां day or पहुंचूंगा night, but और no उसमें matter सबसे whatever पहला happens. नंबर मैं दूंगा हमारे And यूके the नेदरलैंड first से and कुसुमिका foremost माता is जी का। from Netherlands, Kusumika Mataji. मैंने उनको कई बार मना किया कि I रात को have 2 told her बजे so तक, many times that रात you को get 2:30 awake बजे till तक आप 2, परेशान 2:30 मत at होइए। night. नहीं नहीं प्रभु, आपकी सारी But बात she said, मानूंगी I लेकिन ये want to बात नहीं listen मानूंगी। to your Katha live. सो ये इसे कहते हैं एवं व्रत, व्रत लेकर सुनना। एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्तया, इस प्रकार से व्रत लेकर यदि भागवत सुनोगे ना, क्रांति So हो जाएगी। if you listen with like this, then there will be a revolution. What will happen? Jata Anuraga. So you will get love towards the Lord naturally. It will appear naturally. So we don't have love at this point of time. We are doing it by force, but gradually the love for the Lord will appear. Jata Anurago. Anurag means attachment or love. And what will happen? Drut Chit. That means our heart will melt. Uche means with loud voice. Hasati means to laugh. नृत्यति लोक बाह्य, और कभी पागलों की तरह नृत्य करेंगे। मैं कभी कभी You सोचता हूँ will dance like भारत में रात को 12:30 fools. बजे समाप्त होती है, Sometimes I feel that this katha concludes at जब 12:30 कथा at night, समाप्त होती है तो and भागवत जी की at आरती that के time बाद there कीर्तन is a होता है। arti of तो Bhagavad लगभग रात को Tam 1 and बजे congregational chanting. भारत वाले अपने So, बेडरूम or में kirtan. नाचते होंगे। So all the तो people आजू बाजू वाले तो पागल ही in their समझते होंगे, bedroom निश्चित है used वो। to dance. So their हमारे यहाँ neighbors would फिर भी think that they're चलता है, fools. बंदा नाचेगा ठीक है। In US still ये it is कुसुमिका day. माता जी रात को With 2 बजे Kusumika नीदरलैंड Mataji में अपने रूम में in डांसती Netherlands, है। right, 2 o'clock she उनके पति भी dances. देखेंगे तो Her husband also सोचेंगे will इसका एक स्क्रू ढीला हो गया think that है, she has lost her थोड़ा mind. इसका ढीला हो गया है। 2 बजे कोई ऐसे नाचता है 2 o'clock at night, और ध्यान who देने वाला कान dances में like होता है ना, this? वो बाहर तो आवाज नहीं आती रात को, तो कान में वो डाला है और ऐसे नाचते, तो बाहर वाले को तो कुछ पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसे कहते हैं उन्मादवत So नृत्यति। this is called Unmad Nritya, लोक बाह्य, लोक से क्या Lok लेना, Bhaya. जगत We से क्या don't care लेना देना। about the लोक से people of बाह्य this हो world. जाते हैं They ये get कथा सुनकर। और अब detached प्रश्न from है हमारा the material कि people कथा एक or है, world.
So our question that this pastime is one, how can we get so many benefits? Then Nav Yogeshwar reply as follows. परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमान यथा श्रुतस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो नुदासम। पहले श्लोक में आया श्रृणुवन, सुनना है। So in the first verse there was the word shrunvan, that is to hear, and then in the second verse it was vrat, that is to take a vow. When we listen to the pastime of the Lord by taking a vow, what will happen? You should listen from this verse. First, bhakti, that is unalloyed devotional service towards the Lord, or it implies love towards the Lord or Supreme Personality of Godhead. So when we take a vow, what will happen? We will get Lord's unalloyed love or devotional service. And along with that, what will we get? ईश अनुभव, इस संसार से जो परे हैं, जो So the Lord who is away from the world, who is unmanifested, so we will get realization of such Lord. So we are not experiencing yet, but when we take a vow and constantly listen to the pastimes of the Lord, then we will attain the love towards the Lord, and then we will experience a realization of the Lord. And the third is virakti or detachment. We will get detached from the material world, its people, etc. Anyatra. So everything except Krishna, we will get detached to everything else. नव योगेश्वर मुनि कहते त्रिक एक काल, ये तीनों say these all three things will happen simultaneously. Trik ek kala means simultaneously. All these three things will happen simultaneously. It's not that first you will get the love and then you will experience the Lord or detachment. No, all of these you will get simultaneously. So the question is that the pastime is one and you get three things. Why or how? They give an example. Prapadya manase yatha shrunata suyasa. As someone eats the food, and by eating the food, he gets three things, or three things happen simultaneously. What happens? जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहला होता है तुष्टि। तुष्टि माने Then first of all, we get tushti, that is satisfaction. When we put one bite in our mouth, we get satisfied. And along with that, we get pushti, that is the body get nourished. So we get satisfaction and energy, and along with that, what will happen? Shuddh payo anudhaghas. That means it will, our hunger will be gradually destroyed. It will be removed. So three things. The mind will be satisfied, body will be nourished and energized, and the thirst, hunger will be removed. ठीक उसी प्रकार यदि हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण अनुभव, the pastimes of the Lord, then we will get love towards the Lord, the realization of the Lord, and detachment simultaneously. That is what the gopis are calling here.
कलमश अपहम। हे कृष्ण, आपकी कथा जीव के So this is, oh Krishna, your pastimes removes all the dis- distress and obstacle. So let me add a few things about Kalmasha. So we can shorten it as well, but now that we are discussing, कथा सुनने से गोपियां कहती हैं तव कथा कलमश अपहम, जीव के कलमश को मिटा देती हैं। तो कथा distress. सुनने से कलमश मिटते हैं, ये So प्रोसेस क्या by है? listening to the pastimes, the distresses are removed. What is the process? एक बात ध्यान से सुनिएगा, The misery भगवान of का the साक्षात्कार living हुए entities बिना without कलमश realizing से the मुक्त Lord, होना we इम्पॉसिबल है। cannot be relieved of और इजी कर दूं, the misery or distress. आपको सुखी होने के लिए If you want चाहे to दुनिया be की कोई भी happy, वस्तु मिल जाए, if you वो have सुख everything, तब तक नहीं yet मिलेगा you will जब not तक get भगवान का the साक्षात्कार नहीं happiness or होगा। satisfied till the point we कृष्ण का have रियलाइजेशन realized the नहीं Lord. होगा, Till the तब point तक we haven't realized the Lord, न तो we सुख will not मिलेगा न दुख get दूर होगा। happy, सो nor कलमश our अपहम, distress will be removed. गोपियों ने क्या कहा कि आपकी कथा सुनने से कलमश दूर होते हैं, लेकिन कलमश तब तक दूर नहीं होंगे जब तक Distress won't be removed भगवान till का the point साक्षात्कार नहीं होता। we realize the और Lord or रियलाइजेशन experience नहीं the होता Lord. तो कृष्ण कथा सुनने से एक्चुअल So, प्रोसेस क्या है? what is कृष्ण the कथा actual सुनने से process? भगवान का साक्षात्कार By होता है, और जब listening to the साक्षात्कार pastimes of the होता है Lord, we तब get कलमश realization दूर of the होता Lord. है। And when ये we realize the टेक्निकल Lord, then टेक्निकल only मैटर है। our जितना misery or sorrows are बेसिकली destroyed. मैं So, जो this is a यहाँ डील कर रहा हूँ ना, technical यहाँ matter. तो इतना नहीं So, है, लेकिन अमेरिका में nowadays जाके I'm बड़ा dealing with मधुसूदन engineers, प्रभु, फिर etc. कमनीय कृष्ण प्रभु, Madhusudhan ये Prabhu, इनकी लैंग्वेज भी Kamni इंजीनियर्स की Krishna. होती है। So, they और talk हम लोग in के यहाँ तो रोज the रेडियो language of सुनता engineering वही है, तो and we तो discuss. थोड़ा सा टेक्निकल माइंड हो चुका So, है। my mind has become little technical with these people. तो 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 कैसे टेक्निकली So, कैसे how ये कलमश अपहम, कथा how सुनने से this कलमश दूर Kalmash होते Apaham हैं, is तो possible? वो टेक्निकली कैसे दूर होते हैं? जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो आपने कीबोर्ड प्रेस किया तो तुरंत आ जाता है, लेकिन उसमें टेक्निकली वो कैसे Use चलता the है? system, वो कमांड it जाती हैं happens सीपीयू में, फिर automatically, प्रोसेसर but में, how it और फिर happens डिस्प्ले में in आती है। behind? उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। So, there is so much सो भगवान process की involved टेक्निकली क्या है, in internally. इसको So, समझने what के लिए is the भगवत गीता technicality पढ़ना here? पड़ेगा। We एक should आटा enter मारो जो Bhagavad कुरुक्षेत्र Gita. में So, मारना let's पड़ेगा। move to गीता जयंती Kurukshetra. चालू है, Anyways, Gita Jayanti कुरुक्षेत्र is में एक going on. आटा मारते हैं So, सब में, एक आटा मारता है। let's take a look or मज्जिता reference in Bhagavad Gita. मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत गीता में, ये गीता का श्लोक, गीता में भी कथा की कितनी महिमा So, आप देखो तो सही। this is Bhagavad Gita, and here गीता में also कृष्ण the कहता है pastimes of the Lord मज्जिता are being glorified. मद्गत प्राणा। हे अर्जुन, ये गीता के 10वें अध्याय का Now, 9वां श्लोक है, so this 10.9। is कृष्ण कहते हैं 10.9 अर्जुन, जिसका verse from चित्त Bhagavad मुझ में Gita. लगा Krishna है says, और those मदगत whose प्राणा, heart is focused on और me जिसका प्राण मुझ में लगा है, and whose mind, body, मतलब and जो soul मुझसे are प्रेम into करता me, है, that means a वो person who करेगा loves क्या? me, what will he मेरे do? से प्रेम जो करता है वो क्या करेगा? What will he do? मानो अर्जुन कृष्ण से पूछे, कृष्ण So किसी if को आपसे Krishna प्रेम हो गया is asked by तो वो Arjuna, बंदा if करेगा someone क्या? loves you, what will he तब do? कृष्ण कहते हैं Then बोधयंत Krishna replies, परस्परम। Bodhayanta Parasparam. जो मुझसे प्रेम करता है अर्जुन, Those who love me, वो O बोधयंत Arjuna, परस्परम, वो आपस में मेरी they कथा गाता है। sing my हर glories. दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा,
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये पाठ जो है मैंने अहमदाबाद के लिए रखा है। मेरी सारी बड़ास जो है ना मेरे हृदय में So बहुत I have भरा हुआ है, kept this लेकिन वहां for सारा जब खत्म Ahmedabad. होगा ना तो सब वहां निकालने वाला हूं। इसलिए आप लोग बने My heart रहिए। is overwhelmed. खैर, तो मद चिता मदगत प्राणा, जिसका चित्त मुझ में लगा है, Madgata prana. प्राण मुझ में Those लगा है, who वो क्या are करेगा? engrossed बोधयंत in me, परस्परम, what will they do? वो मेरी Bodhayanta चर्चा करेगा parasparam. They will परस्परम। discuss और about तीसरी लाइन me में with कथयंतश्च others. माम नित्यम, वो Kathayantascha mam नित्य मेरी nityam. कथा ही He करता will रहेगा, listen or मेरी speak कथा about गाएगा, me मेरी on कथा a daily सुनेगा। basis or कथा की eternally. महिमा गीता में भी है, So this कथयंतश्च, is the वो कथा glory of करेगा, the कथा pastime of the गाएगा, Lord in Bhagavad और उस Gita. कथा में ही तुष्यंती च And रमन्ति च, Tushyanti cha Ramanti वो cha. कथा में ही संतुष्ट होगा He और becomes कथा में ही satisfied in the रमण माने pastimes आनंद प्राप्त and करेगा। जीवन he में will उसके लिए और कोई get एंटरटेनमेंट या और कुछ नहीं है, bliss in that. कथा He में ही doesn't वो have सब any कुछ other source of संतुष्ट entertainment. है और आनंद है। He gets satisfied and ये मेन enjoyment श्लोक नहीं है, from the इसके pastimes of बाद the वाला Lord. मेन पॉइंट है। मैं तो पहले भूमिका बनाता हूं ना, आप लोग जान चुके हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि जिसका जीवन ऐसा है, Krishna tells मेरी the कथा में person ही who has आनंद such लेता है, life, मेरी कथा में ही who संतुष्ट रहता है is और satisfied उसमें in my रमण करता pastime है, फिर and अगले श्लोक में enjoys that, मेन पॉइंट then 10 in पे the कृष्ण क्या next बोलते हैं? verse Krishna says येषाम in सततम 10.10, भक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, इस प्रकार सतत in this manner, निरंतर प्रेम से constantly मेरी with कथा love, सुनता रहेगा, a person who ददामी listens to my बुद्धि, pastimes, dadami कृष्ण कहते buddhi, हैं मैं उसे बुद्धि दूंगा। I will provide him the और knowledge. कैसी बुद्धि दूंगा? And what kind जिससे of वो knowledge? मेरा साक्षात्कार By कर that सके, he could जिसे कथा सुनने वाला वो श्रोता realize मेरा me, रियलाइजेशन कर सके। बाकी हमारी by क्या which औकात कि हम भगवान pastime का साक्षात्कार कर सके, we लेकिन could कृष्ण क्या realize. कहते हैं? Otherwise, we are चिंता मत not करो, बुद्धि qualified. मैं दूंगा। But he says, ददामी don't बुद्धि, worry, I will कथा provide सुनते you रहो, the knowledge. बुद्धि मैं You'll दूंगा, keep on जिससे तुम्हें listening to the मेरा pastime, साक्षात्कार होगा and और I will उस give you the knowledge साक्षात्कार से for फिर तुम self-realization or सुखयांति च, realization for तुम me. मेरे पास And with that, प्राप्त हो सकते हो, you will मेरे पास reach आ my सकते eternal हो। abode or come back to me, सो इस प्रकार back to जीवन Godhead. के सारे कल्मश So मिटा in के this manner, हमें all the मुक्ति मिलती distresses है कृष्ण कथा। can be अतः destroyed गोपियों ने by कहा just the pastimes of the Lord. कलमशापहम, Therefore, the gopis श्लोक have की said पहली लेटी Kalmasha Upaham. पति So the पूजन, first line of दूसरी लेटी हम the प्रणाम करते हैं। verse have finished or concluded. गोपी आगे So कहती हैं श्रवण let's move to the मंगलम, next line अद्भुत of the verse. Then they अद्भुत। say Shravan Mangalam. It is कृष्ण amazing. कथा, आपकी कथा कैसी है? श्रवण मंगलम, श्रवण सुनने से So मंगल करने वाली। by listening, मुझे it बताइए, gives मेरा एक us प्रश्न है आपको, इस speciousness. दुनिया में, So I have a question इस for all of you. संसार में In this world, मंगल कौन है? who is auspicious? आप ये मत कहना मुझे मंगल ग्रह है, ग्रह की बात नहीं कर रहा, I'm मंगल, not talking about the मंगल planet सिंह डॉक्टर की Mangal, बात भी नहीं कर रहा हूँ। and I'm not talking मंगल about the माने robber शुभ, Mangal. कल्याण। Mangal means मंगल कौन है इस संसार auspicious. में? So who is auspicious in this world? पार्वती ने शिव जी को पूछा तो Parvati शिव ji जी ने क्या asked this उत्तर दिया? to the Lord Shiva, and what does मंगल he replied? भवन अमंगलहारी, Huh? मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊषु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार
So, in अब this manner, मंगल कौन है? who is अब समझ auspicious? में आ गया Now you मंगल might have भवन। understood. Mangal मंगल के Bhavan. भवन है भगवान राम। So, भगवान Lord कृष्ण Ram is, or Krishna अमंगल is हारी और अमंगल the को most हरने वाले हैं auspicious, राम और कृष्ण। तो and they गोपियां क्या कहती हैं? remove मंगलम। all सो मंगल inauspiciousness. वाले भगवान And the कृष्ण। gopis are saying अब राधा Mangal. कृष्ण में So, आप here देखिए, Mangal गोपियां means हैं, Lord आप Shri टीवी में Krishna. बैठे हो, साक्षात So, होते ना तो पसीना छुड़वा देता प्रश्न पूछ पूछ के। it's good that you are on the क्योंकि हम television आपकी screen. स्क्रीन में बैठे हो, Had you been present केवल दो एक physically, सेकंड then गला नहीं you would सूख have been जाता। sweating. I can just see you, but I तो cannot मंगल hold, माने भगवान राम catch hold कृष्ण, उसका of प्रमाण है your neck. जी, मंगल भवन So, अमंगल हारी। दिव्येषु Mangalam here दशरथ अजिर means वदन। Krishna. The proof is by Lord Shiva, who अब has मेरा spoken प्रश्न about ये the है Lord. So, my question here कि is, यदि उस मंगल माने भगवान श्री if राम that को, भगवान श्री कृष्ण को auspiciousness, that is, that हमारे Lord अंदर Ram or बसाना है, Krishna, we हमारे want to अंदर situate लाना him है, in our heart, तो we किस want him to इंद्रिय sit के in our माध्यम heart, से हम भगवान को अंदर then ला सकते हैं? through which मंगल medium तो राम और कृष्ण है, we और will राम bring और him कृष्ण को यदि हमारे अंदर लाना है in our heart, तो कौन सी इंद्रिय के which by माध्यम से which हम ला सकते हैं? sense organ, हाथों के माध्यम से, पाँव through the के medium माध्यम of से, hands or जीवा के legs, माध्यम से? through tongue. तब गोपियां कहती हैं कृष्ण Then gopis केवल एक say ही इंद्रिय है there is only जिसके one द्वारा sense by मंगल को which हृदय में ला सकते हैं, this और Mangal वो can इंद्रिय enter है our heart, and that is श्रवण मंगलम श्रीमदाततम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते ये भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, उस मंगल स्वरूप भगवान so को this श्रवण auspicious श्रवण Lord, के द्वारा ही through हम the medium हमारे of हृदय में ला ears, सकते we हैं। can situate him in our आप कहोगे hearts. इतनी अच्छी अच्छी बात आप कहाँ से लाते हो? You might be मान्य wondering इसको from where कहेंगे did हमने you हमारे bring it. गुरुदेव के मुख से सुना So है। let me tell in full हृदय honesty, I राज have heard गोविंद it स्वामी महाराज from के मुख our से। Guru Maharaj, आप लोग कहोगे His हमने भी सुना Holiness है। Radha Govind थोड़ा Goswami सा Maharaj. अंतर You होता might है, say आप that सुनते you हैं तो might भाव में होता have, है, we आप all have सुनते हैं तो also heard. हमारे भाव कम होता है इसलिए याद रख लेते So you all listen with emotion, so हैं। सो you don't remember, but we मंगलम listen with less emotion, so it is श्रवण remembered मंगलम, by us. So Shravan श्रवण के Mangalam, माध्यम से, कर्ण के through the माध्यम medium से of उस ears or मंगल by the medium भवन of को listening, the हम all हृदय में ला auspicious सकते Lord हैं। can enter or इसका situate, प्रमाण क्या be है? situated in our heart. श्रीमद् भागवत What जी is में the proof? In Srimad Bhagavatam, दूसरा स्कंद 8वां अध्याय 5वां second श्लोक, canto, 8th chapter, प्रविष्ट 5th verse, कर्ण रंध्रेण। आप देखिए तो Pravishta सही Karna कितना Randhrena. तालमेल मिल रहा है। Just see how much मंगल का अर्थ everything राम is और getting कृष्ण श्रवण attached here. कान के माध्यम से, और भागवत का ठोस प्रमाण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान कैसे अंदर So प्रवेश होते हैं? the Lord enters कर्ण how? रंध्रेण, Through the कान के medium of माध्यम से। our ear. अच्छा है Karna means आपको भी ear. कान है, भगवान ने It's बहुत good अच्छे अच्छे that कान you बनाए have हैं। ears. नहीं तो मैं सोचता हूँ आदमी बहरा होता Otherwise, तो I कथा है तो think वंचित if ही रह जाता ना। a person who is not हम able to उससे listen अरे भगवान को would एक दंडवत be सीधा करना चाहिए। अच्छा है आपने कान दिए, एटलीस्ट हमको devoid आपकी of कथा तो सुनने listening को to the मिलता। pastime. So we should offer our कान obeisance one प्रविष्ट more time, हमारे that हृदय में you have प्रवेश given us कैसे ear, होते हैं? so that कर्ण रंध्रेण, you have given us ऊपर opportunity to से। listen, and from there you, the Lord can enter our स्वांतम heart. भाव सरोरुहम, और कान रूपी छिद्र से प्रवेश होकर कहाँ जाते And हैं? from the स्वानम ear, भाव, where does he अपने enters? भाव से भरे Swanam हुए Bhav. हृदय में। He enters the heart that लेकिन is जब filled बिना with भाव से भरे हुए the हृदय में जाते हैं, अरे रे रे रे, ये तो heart गजब that की is filled बात with है, emotion. कचरा जहाँ But देखो when कचरा he बच गया। goes there, he feels that, भगवान oh, जब this कान is के माध्यम so से प्रवेश होते हैं तो untidy, थोड़ा झंझट, unclean. चलो जाता हूँ अंदर, लेकिन जैसे So ही he enters through the medium of fear. भारत के लोकल And once मुंबई he की ट्रेन में आप कभी reaches the सफर करते heart, हो, आप if you ट्रेन have से यदि बैठे traveled हो तो
in the local train in Mumbai, जो गंध आती है, भगवान बोले you ये get गाड़ी में मैं कहाँ the से ले smell आया? that where on the dirtiest beach क्या I'm करे here. क्या करे क्या करे? So what तो should I भगवान do बोले ये now? कथा सुनना Then तो Lord छोड़ेगा think नहीं, he will not मतलब मुझे तो ये leave to छोड़ने listen to वाला the है passage. नहीं, So he और won't यहाँ leave मुझे me. रहना तो है, And now लेकिन I यहाँ have का to रहना stay मुझे here. पता है, यहाँ तो But सब कचरा he और गंदगी भरी हुई है। is residing तो in तीसरी लाइन this में क्या कहते हैं? धुनोति garbage. समलम कृष्ण, So then what does Krishna कृष्ण do? हमारे Dunoti पाप से भरे Shamalam हुए Krishna. हृदय को धो देते हैं। He कैसे? cleans सलिलस्य our यथा शरद, heart जैसे filled शरद with ऋतु का emotion or सरोवर love स्वच्छ as होता है, सुंदर होता the है, pond ऐसे of भगवान हमारे autumn भाव is रूपी very clean. हृदय को, सरोवर को शुद्ध कर देते हैं, Similarly, he सरस बना purifies देते our हैं। heart. करना क्या है? What are we प्रविष्ट supposed to कर्ण do? रंध्रेण, कर्ण के Pravishta माध्यम से Karna Randhrena. कृष्ण की Through the कथा medium को of our प्रविष्ट ears, कराना है, we should कृष्ण कथा listen को to the सुनना है। pastimes of the Lord. इसलिए गोपियों ने कहा Therefore, the श्रवण gopis मंगलम, said, Shravana श्रवण Mangalam. मंगलम माने, और एक अर्थ होता है Shravana Mangalam also तव कथा, implies श्रवण मंगलम, आपकी कथा your श्रवण करने से pastime. By मंगल देने listening वाली to है, that, शुभ provides देने वाली, जीवन में auspiciousness. कल्याण देने वाली है। कृष्ण आपकी It कथा, is for our श्रीपद welfare. श्रीधर स्वामी ने इसका और एक अर्थ किया। Shripad Sridhar श्रीधर Goswami गोस्वामी, has मैंने सोचा था कि given आचार्य जी another का नहीं, केवल reason. स्वाभाविक चर्चा So करूंगा, लेकिन आचार्य जी I भी had जाते thought हैं। that श्रीधर I स्वामी will ने not लिखा discuss है the acharyas, श्रवण but somehow they enter. श्रवण So, मात्रैक मंगलम, ये श्रीधरी टीका है। so श्रवण मात्रैक Sridhar मंगलम माने Goswami says, कृष्ण कथा Shravan, की क्या महिमा है? कृष्ण कथा श्रवण the glory मात्र of से ही the जीव का मंगल करती है। pastime इसका of the मतलब Lord is that by समझे, just केवल listening, तोते की it तरह gives बोल लेना अलग चीज है, थोड़ा सा अर्थ समझिए। auspiciousness. So, just श्रवण by मंगलम, श्रवण मात्र speaking like a एक parrot is मंगलम, something else, but to understand is केवल something different. श्रवण करने By just मात्र से मंगल listening करती to है। the pastimes of the Lord, अब थोड़ा सा it कंपैरिजन can करना provide पड़ेगा, auspiciousness. कृष्ण So के now we need to अमृत और compare स्वर्ग के अमृत को, तो ये बात समझ में आएगी। by the स्वर्ग का elixir जो of the अमृत है heaven, then वो only we will श्रवण be able to करने understand. मात्र से मंगल करता है? So नहीं, वो तो पीना the पड़ता है, अंदर nectar देखना पड़ता of ना, heaven we तो have to सीप को लेके drink पीना, वो जब स्वर्ग it. का अमृत जब पेट में So the जाएगा तब मंगल, तब भी nectar of मंगल नहीं elixir, when करेगा, वो it reaches the निरोधन आएगा, stomach, then जो भी करे, only जो इफेक्ट it करेगा। will make us disease free. स्वर्ग के It अमृत will को not make अंदर us डालना auspicious though, पड़ेगा, but तब somehow we जाके have to मंगल करेगा। make it लेकिन कृष्ण enter कथा our को body. अंदर डालना नहीं है, श्रवण But the मात्र से pastime of the मंगलम, Lord, केवल कृष्ण we need कथा not को enter. सुनो, By जीव just का मंगल, listening, और the सुनकर यदि जीवन में living उतारो entity become तब तो क्या auspicious. ही क्या, And if तब you तो उसकी imbibe in your क्रांति हो life, जानी then है। there will be a जीवन में revolution in उतरे your तब life. तो बहुत If you बहुत दूर imbibe की बात it, है, then लेकिन it's a श्रवण great feat मात्र, to perform. But मैं we कभी should कभी listen. फिजिकल कथाओं में, अब तो बहुत सारी Sometimes कथाएं कर in चुके हैं, physical तो कभी katha कभी हम बैठते हैं तो that I कुछ लोग perform, आते हैं महानुभाव, sometimes people come और कथा को रोकनी पड़ती है, और फिर माथा and भी we have to खराब होता है, stop लेकिन हम भी क्या the करें, बैठे past. रहते हैं। But somehow फिर वो लोग we बोलते हैं, also have to प्रभु जी इतने दूर से stop. आए हैं, You say that इस Prabhuji कान has से come सुनकर from so यहाँ far. से मत निकाल देना, You should not कथा वेस्ट put हो from one ear जाएगी। and take it मैं out सोचता from हूँ the कि other. फिर तो खत्म It will be करके बैठ wasted. जाए तो अच्छा So है, sometimes we feel लेकिन that he ये भी should कहता stop हूँ, now. I कथा also इस say, कान से डालकर यहाँ से निकालो ना, फिर भी even वो if you मंगल करती है। live in, listen अरे from इस one कान ear से and अंदर तो get गई, let it go यहाँ out from कान से other, अंदर जाकर still यहाँ it से will निकली, become अरे इधर auspiciousness. जबड़े में तो अंदर रही, इतना टाइम तो अंदर रही कि नहीं? At गोपियां least it कहती हैं stayed there for कथा a while, श्रवण and that मंगलम, is गई अंदर enough मंगल कर देगी, to give auspiciousness और to अगर us. यूटर्न लेकर यहाँ से ऐसे And गई if you तो take a कहने की क्या, U-turn, then सुनने it मात्र से is मंगल so करती much है, beneficial. तो So by सुनकर just जीवन listening, में it उतर जाए। can be so beneficial. But if you imbibe कथा it, की निंदा then करने वाले बहुत होते हैं, imagine ये श्लोक का how कोट much पढ़ के उसको दिखा देना। magnificent कुछ लोग it will कहते be. हैं ये So श्लोक some चर्चा people, करने की there are so जरूरत many क्या जरूरत people है, who criticize Katha, कोने माइक गया છે that હે? why, what is क्या the need બળદેવ to છોકરાવાળા ઓછા use છે? that much અરે money? બળદેવ ભાઈ ને અમદાવાદ में इतने They बड़े might say खाना that खिलाने की क्या
he, what is the need to give food to so many people? The person who takes the first plate is the one who criticizes. What is the need to perform such a pastime? What is the need to be awake at night? But the gopis say, even sometimes devotees criticize who have got benefited by listening to the katha. By just listening to the katha, what will happen? The gopis say that you don't do anything in your life after listening to the katha. Don't imbibe anything yet. By just listening, your life will become auspicious. And if you imbibe it, then it will be overwhelming. But by just listening, also, it will bring auspiciousness to our life. It's the time for concluding. And I told Madhusudan Prabhu that this is the verse, is my favorite. I'm playing on my home ground. So, Shravan Mangalam, Nikunj Gopika Mataji, you're most welcome here. So, Sripad Sridhar Goswami says, Shravanek Mangalam, and the other meaning, listen carefully, in this world, all other religious activities, and by doing such work, we have to perform and take care of rules and regulations. But in the pastimes of the Lord, we need not need any rules and regulation to be followed. By just listening, it will bring auspiciousness. It's not that we will have to take water in our hand, and if you take a vow, it is good, or sankalp, then it is good. But gopis say that that is also not required. By just listening, it can be beneficial. Sometimes in katha, people perform karma kand. It is a decoration should can be done, but it removes the essence of the pastimes of the Lord. So the gopis say that by just listening, it will bring us viciousness. So if you do, then it is good. But the pastime by just listening brings auspiciousness or is beneficial for us. Therefore, Durga Saptashati, the Devi Bhagavad, especially the people who are involved in Karma Kanda, etc. So there is a verse in Durga Saptashati. You can see it is mentioned. So by just listening, Harati Papani, no vow, no rules and regulation, nothing. This is mentioned in Durga Saptashati, Shrutam Harati Papani, Shravanam. So in this manner, the gopis sing the glories of the pastimes of the Lord. So there is another meaning of Mangalam, which we should try to understand. I have sometimes mentioned, but here it is a special point, so I need to repeat myself. What does Mangal means? Let me ask all of you. What is Mangal? Someone will say the Mangal is sitting next to me. So once what happened? A couple got married. They didn't had any kids, and time elapsed. They didn't have any kids. They went to Lord Hanuman and prayed, "Oh Hanumanji, please bless us that we should beget a son."
So Hanumanji thinks in his mind, I am not married, and how can I give you a child? But this person was sentimental. He said that if Hanumanji, if if I beget a son, I will offer you a diamond necklace. Hanumanji, the Thakurji's mandir is being constructed. So if we get this jewelry, then we can support this temple. So he begot a son. So someone said that don't forget about Hanumanji. So he said that let the child be little old. So 5 years passed. Uh, So the time elapsed 5, 10, and he was a Gujarati. He kept his son's name as Hiralal. He said, your son is now 15-year-old. Now you should offer that diamond necklace to the Lord. So he said, thought that, okay, let me offer. So he gave, uh, he offered the 5 rupee garland to his son Hira, and then that garland he offered to the Lord as a diamond necklace. So I was asking what is Mangal, by just keeping the name auspiciousness or Mangal, one cannot become auspicious. Usually in Bharatvarsha, in railway station, when you're about to catch the train, or when Rati Manjri Mataji took the flight from Delhi, she has this experience. She was, when I late, they had to call the airport. Then only they could board the flight. So when we are at the airport or railway station, there is an announcement that is made that the time for the flight is, yes, you all should take your seats and we all pray your travel will be auspicious. These are the words that are usually regularly we listen. So what it said, your journey should be auspicious or happy journey. Now tell me, how will our journey be auspicious? For an example, if we are traveling from Mumbai to Delhi and there is an announcement in Mumbai that your travel will be auspicious, so when will it be considered auspicious? First, this train is to reach Delhi. It should reach Delhi only. So it should reach the destination first. We have started for Delhi, so we should reach Delhi. Second, we should be reach on time. And third, from Mumbai to Delhi, there should not be any problem or distress. So when we have all these three things fulfilled, then only the journey will be considered auspicious. And even if one thing is missing, then it will not be considered auspicious. So what is said here? Shravana Mangalam. So the journey from Delhi, Mumbai to Delhi, it will be auspicious if we reach the destination, if we reach on time, and and the duration of our travel should not be, or should be devoid of distress. So this is the journey from Mumbai to Delhi, but this embodied soul is trapped in this 84 lakh species of transmigration from one body to another.
how it will be considered auspicious? The body is, or this living entity is in, so this living entity is in all entangled in this, so we can go to hell or hell. So some, so everybody have to leave. So how will it become auspicious or considered auspicious? It should reach destination. What is the destination of the soul? The eternal abode of the Lord, Vaikuntha. We should not go to hell first. Second, we should go time to time. That is, we should reach in this birth to the eternal abode of the Lord. And the third, we should get eternal abode and in this birth and without distress. There should not be any obstacle in performing our devotional service to the Lord. So there should not be any obstruction to go back to Godhead. Then only our journey will be considered auspicious. And if we want to make it auspicious, then Shravana Mangalam, Tva Katha. We should listen to the pastimes of the Lord, and then the journey will become auspicious and their life becomes all auspicious. And in this birth, they reach the eternal abode of the Lord, and there is no distress or obstacle in that path. Sometimes we hear Mirabai left her husband, Shabri left the material world, Bharat left his mother, so we are also leaving. Then we tell that you should not leave now. Once you are purified, then only you should leave. And we should not try to forcefully detach, but it should, we will automatically detach. So these engineers tell that one time we should leave everything. So this is the verse for them. न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत न जायते। हम शुद्ध हैं कि नहीं So इसको we are चेक pure, pure or not. This is the meter to check that. That is the pastimes of the Lord. What is our situation? We can check through the pastimes of the Lord. 11.20 and point 9 in Srimad Bhagavatam, it is said till the point Karmani Kurvita. So we should take responsibility of our body and bodily relationships till, till the point you don't have Shraddha of faith in my pastimes. Mat Katha Shravan Avadu. So this is the barometer to test or check yourself where we stand, whether these responsibilities of the body are to be fulfilled till the point till completely our heart is focused on the pastimes of the Lord. If our heart is engrossed in the Lord for 24 hours, then you should leave. But if not, then gradually we should keep on listening and get purified. And do remember one thing, no matter how much great work you might have done, but if you don't have interest in the pastimes of the Lord, then all those great feat that you have performed is nothing more than labor or hard work. If you don't have interest or attachment to the pastimes of the Lord, then all the good work are futile, and everything is decided
or the barometer is the pastimes of the Lord श्रीमद to meter or judge कृष्ण तब all our कथा आपकी works. कथा कैसी है श्रीमद So श्रीमद का अर्थ then क्या the है gopis परम say, सुंदर your pastime is आपकी Srimad, that कथा is extremely परम beautiful. सुंदर है They say that your pastimes are extremely यानी beautiful. कृष्ण कथा कितनी सुंदर फिर कृष्ण कथा सुनने वाले कितने सुंदर होते हैं And आप देखो तो even सही the listeners are also very और जब कृष्ण beautiful. कथा सुनने वाले सुंदर हो जाते हैं तो बोलने वाला नहीं हो जाता होगा आप लोग बोलो तो सही Even नहीं नहीं प्रभु the हम speaker सुंदर will सुंदर also बोलते हैं become beautiful. तो श्रीमद श्रीमदे सुंदर So Srimad श्रीमद का means अर्थ होता है श्री beautiful. माने सुंदरता श्री के बहुत सारे Srimad. अर्थ है So there are so many meanings of Shri, कृष्ण कथा सुंदर है but इसे the pastimes of बोलने the Lord वाला are सुनने beautiful. वाला A सुंदर होना listener or चाहिए orator is also beautiful. श्रीपाद वल्लभाचार्य Shripad सुबोधिनी का लेखक Vallabhacharya है in Subodhini सुबोधिनी में श्रीपाद writes, वल्लभाचार्य ने श्रीमद शब्द के ऊपर he एक has टीका जमा spoken about the Srimad word. बोले Do you know? कृष्ण में He और कृष्ण says, कथा में कोई अंतर नहीं है there is no difference between Krishna and his इसलिए pastimes. Therefore, कृष्ण में जो गुण है all वो the सारे qualities or गुण attributes कृष्ण of कथा में Krishna है are present तो श्रीपाद in the महाप्रभु pastimes सबसे of the पहले Lord. विष्णु So पुराण का Shripad श्लोक कोट Vallabhacharya करते हैं says, he quotes the verse from Vishnu ऐश्वर्यस्य Puran and says, समृद्धस्य धर्मस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शषणाम भग इति गणा जैसे भगवान श्री कृष्ण में 6 ऐश्वर्य है so he says that ज्ञान as the Lord has वैराग्य यश 6 धन सुंदरता potencies जैसे कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य है or ठीक उसी प्रकार opulences, so in कृष्ण this की manner, कथा में भी ये his 6 ऐश्वर्य pastimes है also have these 6 opulences. सो श्री मद मद माने युक्त So Mad श्री means का एक inclusive अर्थ है सुंदरता and Shri श्री means का दूसरा अर्थ है beauty, षड and the ऐश्वर्य second meaning is Shad षड Aishwarya or ऐश्वर्य 6 पूर्ण opulences है of the Lord. कृष्ण कथा So the pastimes श्री of the का Lord तीसरा are अर्थ है also filled with शांत 6 opulences of the Lord. कृष्ण कथा And the कैसी है other meaning of Shri शांत is शांत माने Shant or peaceful सुशांत or अब Sushant, देखो कृष्ण that is कथा extremely सुनने peaceful. वाला So शांति को प्राप्त a होता है person who सबसे listens to the सुखी pastimes होता of the है Lord will be और peaceful. कृष्ण कथा He will not be सुनकर confused स्वर्ग or bewildered. अमृत जिसने पिया है And a person who has not heard the अमृत pastimes of the पान Lord, करके even if he had इंद्र की बुद्धि को drunk the अपवित्र elixir करने गुरु बृहस्पति का अपराध किया after drinking the स्वर्ग nectar, का अमृत प्राप्त Indra करके महाराज got more इंद्र contaminated. He सप्तर्षियों का अपराध किए disrespected स्वर्ग का his अमृत bona fide प्राप्त spiritual करके master and नलकुबेर Saptrishis, मणिग्रीव etc. शिव Nalkvir जी and के 9 Manigriv श्लोक में कैसे बुरे बुरे कर्म करने लगे were doing so many evil deeds लेकिन in भागवत कथा अमृत the abode of कृष्ण Lord कथा Shiva. सुनकर But by listening to अर्जुन को the देखिए अर्जुन कहते हैं नष्ट मनो pastimes of the Lord, स्मृति you भूतवा should take a नष्ट reference of मनो Arjuna. He says, my स्मृति all रामायण attachment में has been चलेंगे destroyed. सुंदरकांड में In Ramayana, in Uttarakhand, it is mentioned, कागभूषण जी कहते हैं पायो परम Kagbhushandis ji say, विश्राम Payo Param Vishram. मैंने कथा सुनकर परम After विश्राम listening to the pastimes, शांति को प्राप्त I किया got so much श्री peace का अर्थ है or ultimate शांति peace. So Shri श्री का और एक implies अर्थ peace. है There is another meaning of सांत्वना Shri. It हे also कृष्ण means आपकी कथा Satvana or सांत्वना देती है कभी consolation. कोई आदमी इतना दुखी होता है किसी की Sometimes a सांत्वना person is so वाणी हो distressed जाती है that उनके दुख even को by दूर just करने के लिए empathy of others और removes भागवत से बड़ी सांत्वना कहाँ मिल the सकती है distress, and तो there can श्री का चौथा nothing अर्थ है better than the सांत्वना pastimes of the Lord to console us. श्री माने सुख Shri also means कृष्ण happiness आपकी कथा or श्री मद comfort. सुख से युक्त है आपकी कथा So सुख देती है your pastimes gives भगवान happiness. हरि जब गजेंद्र के सामने प्रकट हुए तो When हरि ने Lord मांगा Hari वर manifested in front जो of चाहे Gajendra, मांग लो he गजेंद्र बोला said, you मुझे तो can कुछ ask नहीं anything. चाहिए लेकिन Gajendra आप said, मेरे I don't शुद्ध need भक्त anything. कभी आपसे कुछ But मांगते हैं if तब do हरि your ने pure कहा devotees ask anything from मैं you? भी आज तक The नहीं Lord समझ said, पाया कि I मेरे don't डिवोटी understand मुझसे कुछ why my मांगते क्यों devotee नहीं है don't ask anything from me ध्रुव or बोले desire मुझे anything कुछ from नहीं me. चाहिए Even केवट Dhruv ने said, बोले मुझे I कुछ don't नहीं want चाहिए anything. कुंती Kevat मुझे also कुछ नहीं said, चाहिए I don't need वित्रासुर anything. मुझे कुछ नहीं Kunti, चाहिए क्योंकि Vitrasur, मेरे
They all said, we don't need anything. So all my pure devotees don't ask anything. Gajendra said, I know. He replied that why your pure devotees don't ask anything from you. Let me show you, tell you. He speaks in his stuti. चनार्थम वाञ्छन्ति ये वे भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना एकांतिनो यस्य कृष्ण आपके जो एकांतिक Ekantino yasya, that means your pure devotees or exalted devotees. Yasya, your pure devotees, na kanchanartha vanchanti. They don't desire anything from you because yeve bhagvat prapanna. They are under your shelter or they are completely surrendered to you. Ati adbhutam charitam sumangalam. Your characteristics are amazing and auspicious, and singing to the pastimes is so much blissful. It gives bliss of ocean or ocean of bliss by just singing your pastime. Therefore, they don't ask you anything or they don't desire anything. The elephant has said such a great thing. Your pure devotees are so much blissful in your pastime that you also cannot provide that bliss. The bliss in your pastime is not even in liberation, it is not even with you. Therefore, your pastime gives bliss. Gopis say, Srimad, the pastimes of the Lord are filled with bliss. So, all other instruments or limbs of devotion are forceful, painful, stressful, it require hard work. But listening to the pastimes of the Lord is susukham kartum avyaya. We all have not even experienced any bliss in our life. The bliss was enjoyed by Lord Parikshit. He was the king of the whole universe. Do you think that he lacked anything? He had all opulence and affluence, fame, everything. Yet you can listen to his experience in just 3 years. He speaks about his experience to Lord Shukdev. He says, I'm the king. I have enjoyed all the good facilities, but oh Lord, after listening to this, by listening to the pastimes of the Lord, by you, I haven't enjoyed that bliss even in the kingdom, because the bliss in your pastime is not even in reigning the kingdom and by surrounded by people who are surrendered to me or who work for me. Therefore, your pastime is Srimad, that is includes bliss. Shri also includes wealth. By listening to the pastimes of the goddess of fortune bestows her mercy on us.
Shri also means the eternal abode of the Lord. It provides eternal abode of the Lord. It also gives fame. So the person who listens to the pastimes of the Lord becomes famous. So who had known you? But since you're listening to the pastimes of the Lord, so wherever I go, people remember you. So your fame also increases. So if a listener's fame is so much, then what about the speaker? It's manifold. So it gives fame, it gives honor. And I have to conclude in shortage of time. The ultimate meaning of Shri is love. Your pastime gives love. It doesn't mean it is they're the words of Lord of Guru Maharaj. He says, your pastime itself has love. It itself is love. So love is the fifth goal. That is the best goal of human life. It is not achieved by listening to your pastime, but your pastime itself is that love or the final goal of human life. And further, they say, Atatam. I hope that this verse does not beats me because we have dismantled this verse. We have dismembered this verse so much. So now let's separate this word. Atatam means atyant vistrut. That is, your pastime is elaborate. Why? Srila Prabhupada says there is no difference between Krishna and pastimes of Krishna. So Krishna is benevolent, therefore his pastimes also are magnificent. Atatam also means Vyapakam or omnipresent. As the Lord is omnipresent everywhere, similarly, his pastimes also are omnipresent. They are present everywhere. The nectar of the heaven is only with the demigods. We just have to listen about it. But the Amrit or elixir of the Lord's pastime is omnipresent. It's everywhere. And the elixir of heaven is not beneficial for everyone, but only for the one who drinks. People like us won't be able to drink it. But the pastime of the Lord's elixir or nectar is beneficial for everyone and everyone can drink it. Atatam means which is easily available or accessible. The, if someone drinks it, all the distresses will be removed. A scholar has said, your pastime is present in Braj. Now, in the last, we should discuss this Bhuvi Grinanti, Bhurida Jana. In this material world, on this earth, Bhuvi Grinanti, Bhuvi means this material world, or it is sung. Grinanti means to sing. A person who sings your glories, Bhurida means great, test, charitable person. So there are so many charitable persons, but a person who gives
The pastime of the Lord is the most charitable of all. These are the words of gopis. This is the major verse from the Gopi Geet, that a person who gives pastimes to you or who sings your glories is the greatest or who is the most benevolent. So I was contemplating on this. So technically, how in Taittiriya Upanishad, might be pondering from where I have to burn my eye. You just have to listen. So 2.9.1 in Taittiriya Upanishad, it is said, मैं किस पॉइंट के ऊपर कह रहा हूं? so we are discussing that the person who sings the glories of the pastime or who provides the pastimes of the Lord is the most charitable of all. How? So it is said, in this world, there are so many types of charity, but the greatest is to give, to make a living entity fearless, to remove the fear of other living entity. Because till the point we are fearful, we won't be happy nor we will be peaceful. So to give or to make others fearless is the greatest feat. And of all the charities, they cannot be compared to make others fearless. They're not even 1/16th to them. If someone gives this abhaydan or make them fearless, because when a person is about to die or on the death, we all will be on our deathbed someday. So he cannot say what I'm thinking, but all living entities at the deathbed, they regret. He might not present outwardly, but inwardly they have great regret. It is mentioned in Taittiriya Upanishad. What does he regrets? You can see Kim aham asadu na karavam. He regrets why I didn't perform good deeds, why I didn't perform any good deeds in my life. Kim aham pap karvam, and why I sinned so much, why I didn't did any good work and performed only evil deeds. So at the time of death, there are so many types of regrets a living entity feels or undergoes. But when a person recites the pastimes of the Lord to such person, a person who has heard the pastimes of the Lord will not be regretful. He thinks that he had listened to the pastimes of the Lord, his mind is focused on the Lord. Therefore, a person who listens to the pastime or who so he gets fearless of the death. And the example is Parikshit Maharaj. You should listen to the Parikshit Maharaj. After listening to the pastimes from Shukdev Goswami for 7 days, what does he tells Shukdev Goswami? He says, Siddhosmi. After listening to the pastimes from you, I have acquired all perfection. I have become the person who have been blessed by you. You have been very merciful and given the pastime of the Lord to us. So you have given or have been very merciful to me.
हे सुखदेव जी, He आपने जो says, पुराण संहिता, ये भागवत पुराण संहिता सुनाई, this Bhagavad Puran you have प्रश्रुतवन्तो वयम, spoken to me, जिससे उत्तम by श्लोक which भगवान, जिस आपकी कथा में उत्तम श्लोक in भगवान your श्री pastime कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन किया गया, the Lord has been और described कृष्ण कथा beautifully. का वर्णन सुनकर And by सुखदेव कहते listening to हैं the same, कि he says, भगवन तक्षक आदि भ्यो, ये तक्षक नाग आदि Takshak के भय से Adibhyo, I निवृत्त am हेमी, अब मैं डर नहीं रहा हूँ। fearless from परीक्षित कहता the है, अब मुझे मौत का डर snake नहीं like है, Takshak, etc. I'm not क्योंकि scared to आपने die मुझे anymore कृष्ण कथा सुनाई, because मेरा I मन have heard कृष्ण the में pastimes चिपका of the है, Lord. मुझे My तक्षक का mind डर heart है, is focused on मृत्यु the का Lord. भय है, और Now I'm not यदि scared मुझे of death मृत्यु or आ the भी snake. जाए And even if तो I'm मैं to ये नहीं die, समझूंगा कि मौत I will आई, not think मैं that ये समझूंगा I died. कि I कृष्ण का will पैगाम आया, think that it was an मौत invitation क्यों by the आई, Lord Himself. प्यार का पैगाम आया, क्योंकि प्रविष्ट ब्रह्म निर्वाणम, मरते Pravishtu समय Brahma हाय Nirvanam. मेरा मन Because at the ब्रह्म time में of death, कृष्ण my में लग heart गया, is focused और on the सबसे बड़ी Lord. बात, अभयम And the दर्शितम त्वया, fundamental point here is त्वया, Abhayam Darshitam आपकी Tvaya. कृपा से By मैं your अभय हो mercy, गया, मैं I भय have हो become गया, यही fearless. सबसे बड़ा दान, That is the करोड़ों रुपए greatest देकर भी charity of जीव all. को मृत्यु के भय से By आप मुक्त नहीं कर सकते, offering लेकिन crores भगवत of कथा rupees, you सुनाकर cannot make them आप fearless, but by मृत्यु के just भय से जीव को speaking मुक्त करा Bhagavatam, सकते हैं। you can make people fearless इसलिए कृष्ण or living कथा का entity दान fearless. सबसे बड़ा दान Therefore, है। it is the most कृष्ण or the कथा greatest ही charity ऐसी of all. चीज, सुत जी कहते हैं यस्याम वे Suji says this is श्रुतिस्मृणानाम, the only जो thing कृष्ण कथा सुनता है that शोक a मोह person who listens, परित्रापहा। his इस all प्रकार गोपी कहती distresses हैं and attachment are destroyed. So कि gopis आपकी कथा say सुनाने वाला your इस pastime, धरती पर सबसे a बड़ा person who दयालु है, speaks your pastimes is the सबसे बड़ा most charitable दयालु of है। all. He's the most benevolent of और all. अंत में, मैं अंत And करके 1.5 घंटा बोल दिया, लेकिन अब अंत में, अब ज्यादा नहीं, in अंत में एक conclusion, शब्द देखिए, जना। if you see the last word, Jana, श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कमाल किया, Shripad Vallabhacharya जना शब्द, has वो जना done शब्द an जो है ना, वो amazing work. बुरीदा में से अ को ले लिया, नीचे आप So, देख रहे हैं बुरीदा, from Burida, वो you द take कर the दिया और उसमें से अ को ले A, लिया और कर दिया alphabet अजना, A, and अजना। make it Ajana, Ajana. अब श्रीपाद वल्लभाचार्य अजना Now, कहते हैं, Shripad Vallabhacharya बुरीद, say बुरीद Urid अजना, Ajana. आपकी कथा का दान करने वाला The अजना person है। who gives your अजना pastime का is अर्थ एक है, Ajana. Ajana अजन माने implies साधारण जन, his साधारण मनुष्य, Jan means ordinary लेकिन human, a आपकी कथा person, का जो दान but करता है a person वो who साधारण gives मनुष्य your नहीं है, वो pastime in अजना, charity, he is not वो ordinary, असाधारण he is पुरुष है, extraordinary वो person. लोकल आदमी नहीं है, वो कोई विशेष है जो आपकी He is कथा someone सुनता है। special who दूसरा gives your अर्थ pastime. अजना Second माने meaning is Ajana जना का अर्थ होता है जन्म, और अजना is माने to birth. जन्म Ajana, मृत्यु से that मुक्त। means who is आपकी कथा relieved का of जो the दान repeated करता cycle है of birth and कृष्ण, death. So वो a person जन्म who मृत्यु से मुक्त हो जाता है, is charitable to give your वो जन्म pastime मृत्यु से परे हो जाता gets है। rid और of अजना the का repeated तीसरा अर्थ cycle of श्रीपाद birth and death. वल्लभाचार्य And the third meaning, अजना, according to Vallabhacharya, of Ajana अजन्म, is अजन्म, means a Janma who has. आपकी कथा का जो दान So करते a हैं person who वो अजन्म gives your के जन pastime है, as charity, माने वो कृष्ण के, भगवान के they पार्षद हैं are जो आपकी the कथा eternal का associates दान of the Lord करते हैं। who gives your pastime सो as धन्य है charity वो to लोग others. So great कृष्ण are the जो people आपकी कथा सुनाते हैं, who चाहे संसार speak के your विषयी pastimes, जीवों को, दुखी whether जीवों they को, speak या to किसी शुद्ध the भक्त पुरुष को materialist भी, or distressed वही people or सबसे to pure बड़े दयालु devotees, है they जो are the कृष्ण most कथा देते हैं। benevolent of all. मैं धन्यवाद करूंगा I want to गुरुदेव को, thank जगत my गुरु Guru शिल Maharaj प्रभुपाद जी को, and Jagat Guru Srila हमारी पूरी Prabhupada Ji परंपरा को, and our जिन्होंने disciplic हमें succession भगवत कथा दी which है, has given और us उस भगवत this कथा को पढ़कर, सुनकर, pastimes of the Lord, and by गाकर just हम speaking, हमारी by भक्ति को, listening, हमारे understanding, प्रेम को we are पुष्ट कर रहे हैं। trying to strengthen our साथ ही साथ unalloyed devotional service केवल towards the Lord. कथा Along गाने with that, वाला ही दानी नहीं
not only the person who speaks is charitable, but if he doesn't get support, he will not be able to speak. We are singing by the support of all of you. If you are not there, where will I sing? The organizers also support. That is the greatest support by the organizer जो of कथा the गाते Katha. हैं, जो कथा का आयोजन करते हैं, वो साधारण लोग नहीं, They वो are not भगवान के ordinary people. पार्षद ही है। They are the वो associates जन्म of the मृत्यु से Lord. परे, वो हरि They के are हृदय में beyond भगवान birth को and death. जानते हैं They are the exalted devotees और of वो the Lord. सबसे बड़ा दान They करते are हैं beloved of the Lord. कृष्ण And they प्रेम are का giving the प्रचार greatest करते charity. They are distributing the हैं। love of the Lord. भुवि गृणन्ति ते So, Bhuvi भूरिदा जना। Grinantite Purida Jana. इस प्रकार In this manner, श्री चैतन्य महाप्रभु को Sri Chaitanya Mahaprabhu, जब राजा प्रताप रुद्र ने ये when Raja श्लोक Pratap सुनाया, Rudra तब spoke this महाप्रभु के verse मुख to से Chaitanya एक ही Mahaprabhu, शब्द निकला, then Chaitanya Mahaprabhu replied, भूरिदा भूरिदा बले कहो Burida, धर्म Burida. राजन, तुम बहुत बड़े He दयालु says, हो, O king, बहुत you are बड़े the great, दयालु हो, most charitable of all. तुम कौन You are हो the मैं नहीं most जानता benevolent. You are और who I don't know, और तुमने आज मुझे इतना कुछ दिया है कि but you have given me so कथामृतम much ये श्लोक सुनाकर by just कि मुझे reciting this तुमको verse, देने के लिए मेरे पास कुछ Svakatamrita. नहीं है, He says that I have इसलिए मैं nothing मेरा to आलिंगन ही offer तुमको you. दे रहा हूँ। Therefore, I am embracing you as a gift to you. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने And महाराज Sri को Chaitanya अपने Mahaprabhu षडभुज रूप का दर्शन कराया। gives him the darshan of his 16-armed form. महाप्रभु ने भी अपनी लीला से ये प्रस्तुत किया And कि through जो his कृष्ण pastime, कथा Chaitanya Mahaprabhu गाएगा, also has सुनाएगा, presented or portrayed that कृष्ण a कथा person का who दान करेगा, sings भगवान उसका or आलिंगन gives करेंगे, the pastime of the प्रत्यक्ष Lord रूप से भगवान will be embraced by the उसको Lord. दर्शन प्रदान करेंगे। He will be सो provided darshan by धन्यवाद the Lord. आप सभी भक्तों का। So I'm गुरुदेव really कहते grateful to हैं all of you. Gurudev जीवन में says, एक पल in के our लिए life, भी कोई कृष्ण even कथा for का one स्मरण moment, करा दें, if उसका someone स्मरण करा reminds us दें, of the Lord तो or जीवन his भर हम उसका pastimes, then उसका उपकार नहीं चुका सकते, we उनका cannot, ऋण नहीं चुका सकते। और जो we are लोग indebted इस कथा to को them गाते for the हैं, life. इस And कथा का those who आयोजन sing the करते pastimes हैं, of the Lord or आज organize हर these जगह जिस pastimes, कथा में कथा को those who सुनते हैं, listen, तन मन get धन से being किसी awake ना किसी प्रकार and से support इस through कथा का प्रचार करते हैं। wealth, mind, or आजकल heart व्हाट्सएप के or body माध्यम से, through the सोशल medium of मीडिया के WhatsApp and माध्यम से social दूसरों को media कथा भेजना, ये भी बहुत बड़ा to दान give है, कीजिएगा। it to others. It जो is धर्म also प्रभु a आपको great प्रारंभ में कहते हैं, भूरिदा charity. You न should जाने also do कौन the same. कब कहाँ Who कैसे knows ये कथा सुने when and और किसका how a जीवन person बदल will जाए। listen and it प्रभु will की ये change their असीम life. शक्ति है। It is the greatest mercy of the जरूरी नहीं Lord. सब लोग व्यासपीठ It's पर not बैठे, necessary लेकिन that अपने अपने everybody will कानों से speak, जितना हो but सके इस according to कथा को our बांटे, situation, इस we should कथा को distribute गाए, the इस pastime to the कथा का Lord. We दान should करें, sing the glories and क्योंकि भूवि give it to गृणंति others ते, क्योंकि इस because भूमंडल पर, Bhuvi पृथ्वी पर Grinantite, सबसे because बड़ा in this दान है world, it is कृष्ण the कथा का greatest दान। charity of all इस to प्रकार provide गोपियां pastimes of the Lord. So in this manner, इस दिव्य श्लोक को गाती हैं। the gopis मैंने sing this केवल इसका divine verse. परिचय आपको दिया, We have just इसकी introduced व्याख्या, this verse, इसका मर्म the केवल interpretation गोपी and ही जानती हैं, understanding. राधा Only रानी the जानती हैं। gopis and Srimati मैंने जो Radharani सुना था, जो know. पढ़ा था, आप Whatever सभी we के have बीच में heard प्रस्तुत and किया। हो read, सकता है इसमें I कुछ have त्रुटियां presented. हो, There कुछ might be कमी हो, some shortcomings तो and आप failures इंतजार in में that. ही हैं, क्षमा So, को but ग्रहण you कीजिए। all should कथा सुनना take ही the good. बहुत बड़ा कार्य है। To listen to यदि the जीवन pastimes में of the Lord उतारे, is a great work. तब तो So we जीवन should सफल imbibe होगा। that in our life आप सभी and भक्त make our life कथा सुनिए, beneficial. So you all should भगवान का listen to नाम the लीजिए, pastimes of the Lord सत्संग and कीजिए, chant the holy names of अपने the Lord, जीवन को perform धन्य कीजिए। congregational chanting. आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। You, I'm really thankful to हम all of you. 5-7 दिनों के बाद ही आपके बीच में After आएंगे, 5-7 days, we will अहमदाबाद meet से, again और from the हम सुनेंगे। from Ahmedabad and listen to the और pastimes of the आने Lord. वाले दिनों में अनेकों
And in the upcoming days, there will be pastimes in so many places. But through the medium of this Amrit Charcha, you all have supported us, which is commendable. And by, like Mahaprabhu, I also want to say, Purida, Purida. You all are very charitable. You are giving your time, money, and heart. I'm really thankful to all of you. And the, I'm really grateful to the organizers, Bhavna Mata. She couldn't already, she said that this katha will be concluded by me. Whenever you have time, we will proceed further in this Gopi Geet and conclude it. So you all have so much emotion, and because of that, thousands and millions of people get benefited. So please stay tuned and continue listening to the Pasam. So I'm really thankful, Rasik Bhai and Bhavna Mata and your family. We pray to the Lord that your devotional service and love towards the Lord increases, and your Mother Gopal should be hale and hearty, and we'll meet in the next pastime. Me and all our listeners will wait for the next series of Gopi Geet. When will you organize the same? Rahis. And we will proceed to the next verse of Gopi Geet. So, our humble obeisances and love to all of you. So let's conclude the session with Jai Jaikar. Today's session. आज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्ण